इज अ बेसिक सेटअप विच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ फोमो, ठीक है? तो आपका जो फीडबैक आना है ना, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इमीडिएट. By 9:45:10, more or less you know whether your trade has become risk free or whether you have gotten stopped out. It is so fast, correct? So, agar my management technique, right, of taking the stop loss up very fast works the best in EP. It may work on VCPs, but it works the much better of a concept on EPs. ठीक है? आर वॉल्यूम से कोई फायदा नहीं होना है, आर वॉल्यूम इज एब्सोल्यूट रबिश। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, लोग क्या दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं कि देखो ये सक्सेसफुल चार्ट, इट इज अ चेरी पिक्ड एग्जांपल। इलेट वेव जहां चलेगा वहां का चार्ट निकाल के दिखाएंगे, हेड एंड शोल्डर जहां चलेगा वहां का चार्ट निकाल के दिखाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ उल्टा स्टडी कीजिए, सारे फेल्ड स्टॉक, फेल्ड ईपी निकालिए, डोंट ब्रिंग सक्सेसफुल ईपी, सारे फेल्ड ईपीज निकालिए, उन फेल्ड ईपीज में पहले के 5-10 मिनट के वॉल्यूम देखिए, then you will see each and every failed EP that had moved up, it always had volume before failing. तो आपको एज क्या मिला? So when we are looking at neglect also, जब हम लोग ने भी पढ़ा था ना, that was also an error that we did at the start, कि when we looked at the US market, the basic rule was like कि QOQ या YOY 30% ऊपर जाना चाहिए, neglected होना चाहिए. I think both of the context we learned by experience later does not apply to the Indian markets. Okay, in Indian markets, since the tracked universe is a lot smaller, the perception or expectation of earnings are a lot more dominant than what the actual reported earnings are. ये कई बार क्या होता है कि ये जो फर्स्ट आपके अर्निंग्स आके इस तरह के रिएक्शंस बनते हैं ना, ये कई बार सेकेंड ईपी के लिए बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड Hmm. करते हैं। Okay, so at that point, it is no way possible that you are going to take a perfect decision. If Monday, okay, Bandhan gaps up, goes up a lot, I'm going to be proven like an idiot, okay, and that is my let go. The only choice I'm taking is how big of an idiot am I choosing to be. But I'll always be an idiot in one case or the another. Excellent, Anurag. Hmm. Really good. Actually, it also addressed the psychological part of the trading also. बोलिएगा मेरे को। Good यस। morning, everyone, and thank you for joining the AP Roundtable. We are glad to have Chirag Kedia ji and Anurag Mangan Krishnan ji with us as key participants for today's discussion. The idea of this session is not just to discuss trades, but to understand the thought process, execution, risk management, and practical realities behind EP trading in a very collaborative and healthy learning environment. EP, in many ways, is a framework of preparation, observation, and execution. While setup may look simple on chart, consistency often comes from discipline, stock selection, position sizing, and trade management. The purpose of today's roundtable is to openly exchange perspective, practical experiences, and nuances, which may not always be visible in static examples or historical charts. So now let me welcome Chirag ji and Anurag ji to kickstart this meeting with their perspective on EP. Then we can take questions one by one. Thank you. First of Chirag, all, thank you, Ishwari ji, for having me and Anurag. Right, and it is a pleasure to do a session for you and your group participant. बहुत सारे लोग हम लोगों के जाने में, we know them already. Mohit is one of my best students, and बहुत सारे लोगों को, राकेश जी को भी जानता हूँ, हिमांशु को भी जानता हूँ. So there's a lot of familiar people we used to talk day in and day out. So good to see you all here, and looking forward for a very, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाला सेशन होगा। राइट, सो ओवर टू यू अनुराग, यदि आप। नहीं, चलो, thanks a lot guys. So I think ये EP season में I know our groups also got very active, and ये primarily मेरे लिए भी बहुत बड़ा harvest season होता है. Okay, so EP is a topic where I think we can just wake up in the middle of the night and we can start speaking. That's what it's become to me right now. It's become one of my bread and butter setups last 3 या 4 साल के अंदर.
Okay, it's a topic probably where I have also generated a lot of returns by design, put in a lot of effort also in. And I'll tell you why. जब आप इंडियन मार्केट्स में लाते हो, राइट, व्हेन यू स्टार्ट स्केलिंग अप, okay, the bigger problem that you face in Indian markets is not many a times the setups. It's not many a times the what do you say, the opportunities and charts or values that you find. Okay, it is the liquidity. ईपी आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या देता है? वो देता है लिक्विडिटी का, ठीक है। इवन वेरी एन एवरेज ऑफ अ लिक्विडिटी स्टॉक ऑन एन ईपी डे इज वेरी ट्रेडेबल वन, ठीक है। तो द मोमेंट यू स्टार्ट स्केलिंग अप, राइट, ईपी बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरो इन योर क्विल। एक फिर सेकंड क्या होता है, आप एक्चुअली देखोगे, राइट, व्हेन वी आर मोमेंटम ट्रेडर्स, व्हाट वी प्रेडोमिनेंटली नीड इज मोमेंटम। ओके, but what we often end up becoming, जो खासकर when I've been interacting with traders a lot more over the last 1 year, I've realized कि we look for entries more than momentum. ठीक है, we would rather prefer a very good entry in an average momentum stock rather than having an average entry in a very good momentum stock. ठीक है, तो ईपी क्या करता है ना, ईपी एक्चुअली ब्रेक्स डाउन योर एवरी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू वांट इन योर चार्ट्स टू एन एक्सटेंट। ठीक है, इट इज वेरी डेलिबरेटली कैनॉट बी कोडेड। ठीक है, इट डेलिबरेटली कैनॉट बी फिट इनटू ट्रेंड लाइंस और पैटर्न्स, एंड दैट इज द एक्चुअल एज ऑफ इट। ठीक है, योर बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक ईपी इज वन ऑफ, इट्स कॉल्ड बाय मेनी नेम्स, आप पीट्स बोलते हो, सो मतलब इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट researched topics in the trading world because it is also one of the biggest value drivers that you see on a chart. Okay. But I don't think there has ever been a very strong coded or an algo system which has been very profitable on this on a scale, and that is where the edge for all of us lie. ठीक है, तो आप कोई भी अर्निंग सीजन में देखोगे, राइट, विच इज रफली व्हाट, 120 to 150 days anytime in a year. You scan anytime during this period, आपके top momentum stocks will always comprise of these earnings winners, okay, or some news-based winners, or some theme-based winners. One. So what you'll end up doing by EP is you are inadvertently going to stocks which are going to be the top winners. ठीक है, आप लास्ट के अगर 10-15 दिन का ही देख लो, where the market was kind of cooling off after a very euphoric month of April, most of the winners that आप यहाँ पे देखोगे will either be follow through of earnings, will, or for the next 20 days will actually be moves that will originate out of earnings too. Okay. ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज, राइट, जब आप पिरामिड करते हो और आप एक्चुअल जब कैपिटल एलोकेशन करने जाते हो, दिस इज एग्जैक्टली वेयर द लिक्विडिटी इज फ्लोइंग। ठीक है, जब आप डे जीरो पे हो, राइट, व्हेन द ईपी, सपोज इफ यू आर ट्रैकिंग पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स एंड एट द 9:15 व्हेन यू आर पुटिंग इन द ऑर्डर, okay, this is the earliest point where you are in sync with the institution. Okay, you're not waiting for the stage two. You're not waiting for a flag or a volatility contraction pattern to ensue. Okay, this is the point where you and the institution are putting the order at the same time. Okay, so instead of waiting for the flag in itself, you're literally getting at the bottom of the pole. तो यहाँ पे जब आपका अल्फा होता है, राइट, where you also then get multiple pyramiding opportunities, is where EP is probably one of the best setups in terms of risk reward in India. And India में आप majorly because of the depth of the universe that we have, you make money predominantly through two ways. ठीक है, you have a very big move, a big size in a big move, one, or you end up taking so many small moves that it compounds into a big move. And EP in both the cases actually gives you the option to do that. Okay, so what we'll do today, I think basics I'm assuming most of you would have seen. Okay, but keep your questions as practical as possible. Be as brutal and probably upfront with your questions also, because that is how we have also been with ourselves. So please don't hesitate if there are any questions within the next few hours on anything on EP. Okay, even if we don't have an answer, I hope we don't have answers to all the questions because we are also looking for more questions to answer. One, and also, Abhi, I think just before the session started, right? I think me, Chirag, and Ishwari ji were also just discussing कि अगर हम लोग एक ही क्वेश्चन का शायद आप 3 बार पूछोगे भी ना, so probably we'll have different answers for all the three, and all the answers may also be right to an extent.
ठीक है, so that is where the context that we are coming out from. Okay. Okay. Anyway, Chirag, you want to add in? Yes. A little bit. Then we'll I start will talking. add one thing here, like we were discussing this thing with Ishwari ji as well. There is a lot of discussion around, you can say, what is a setup, what is a strategy, right? So today morning I was discussing with a US based trader as well. उनका अच्छा खासा portfolio था. He was making quite good, a few millions of dollars में उनका return. So I was discussing with them, same thing. होता क्या है कि ये समय जो है वो information revolution का है. At every, चारों तरफ से हर जगह से आपको भूपू की तरह इंफॉर्मेशन आई जा रही है. पॉइंट ये है कि उस इंफॉर्मेशन से क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, क्या वो विजडम में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगेन एंड अगेन मैं देखता हूँ, वी हैव डन अ वेरी मैसिव वेबिनार ऑन ईपी, राइट. बट एक चैलेंज जो आता है, इट इज नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. यदि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है तो उसका कारण क्या है, राइट. वो आपकी सक्सेस में कैसे ट्रांसलेट होगा. आई बिलीव दैट विजडम इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विजडम इज नॉट अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, दैट आई बिलीव. तो यदि मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बिफोर वी स्टार्ट, राइट, आई विल आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, राइट. यदि मैं आपको 3 वर्ड्स में, राइट, ईपी को डिस्क्राइब करने, 3 वर्ड्स में या 3 छोटे सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस शुड नॉट हैव 2 और 3 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए सेंटेंस में, तो क्या आप ईपी को डिस्क्राइब कर सकते हैं. आप लोगों ने हम लोगों के साथ समय स्पेंड किया, ईपी ग्रुप में स्पेंड किया है, इतने सारे डिस्कशंस हैं, बहुत लोगों में ने आप में देखा होगा, वेबिनार्स हम लोगों के देखे होंगे. क्या आप 3 लाइन में ईपी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ईपी का सेटअप क्या होता है. यदि आप नहीं करेंगे, then you don't have a mental clarity, right. If you are able to do that, then you will be able to, you understand what you are doing. You can put it in the I- chat if you want. Unmute Yeah. me. Yes. Ayan Mehta has put character change in behavior. Hmm. Hmm. Burst with high Akash volatility. Hmm. burst with high volatility. Okay. Anybody else? Turn around Turn around. story. So, hi, Dinesh Dinesh. is here. And I don't know DJ's phone. Drift due to event new launch. Hmm. Okay. This- Pradeep, moving liquid stock, surprising the market participants. Momentum, change in character, major liquidity, sudden move, some news, quite a good number of response. So good response. अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि what is the setup that you trade in? क्या वो आप मुझे 3 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं. आपने कारण तो बताया कि पीछे का कारण क्या है, अंडरलाइंग रीजन. What basically is your setup? What you are trading? क्या देखना चाहते हैं. 3 की पॉइंट्स बताइए जो आप देखना चाहते हैं. 3 की पॉइंट्स इन 2 और 3 वर्ड से ज्यादा. VCP, resumption, SVRO, strength through grab. Volume, catalyst, and price behavior. Nice. Good responses. Maybe ignored. Okay. Yes, Chirag ji. So I will say, I will add a few more things. Right. ज्यादातर जो आपने आंसर दिए वो गोल गोल आंसर्स थे. It wasn't brutally honest answers. Because resumption of demand is one thing. How can you put it into a quantified way? What exactly you are looking for? I will describe it in 3 words. Point number 1, you look for a catalyst, right? News, earnings, जो भी catalyst. Second thing, neglected. That is the second point. Third thing is gap or something that can tell you that the catalyst is actually going upward. ठीक है, तीनों के बीच के अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ. एंड दैट क्रिएट्स एन ईपी का सेटअप जो होता है वो इन 3 चीजों से बनता है.
राइट। इन तीनों एस्पेक्ट का अंतर क्या है? कैटलिस्ट कैन कम इनटू अ स्टॉक बट इट मे नॉट ट्रांसलेट इनटू एन अप ट्रेंड. It can be a level to create a bias. Why it is important? I will come back to that thing. Some answers are good, but I will describe a few things here. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि catalyst news या earnings can give you a bias that the stock may go up. There is no guarantee that the stock will go up, right? Because there are other elements as well which actually holds a lot of importance. एक example के तौर पे लीजिए नेटवेब लास्ट क्वार्टर में, right? It was a perfect 5-star setup for an EP trade. सब कुछ था उसमें, right? दूसरा पॉइंट क्या होता है? नेग्लेक्टेड, राइट? नेग्लेक्टेड इज समथिंग व्हाई योर सरप्राइज विल वर्क, व्हाई योर कैटलिस्ट कैन रिजल्ट इनटू एन अप मूव और समथिंग लाइक दैट, राइट? होता क्या है, प्राइस इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म. जब मैंने पहली बार अपनी जिंदगी की पहली बुक पढ़ी थी टेक्निकल एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फंडामेंटल फाइनेंशियल मार्केट्स, जॉन जे मर्फी की किताब थी, राइट? सो इट डिस्क्राइब वन थिंग कि ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस के काम करने के 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट एंड आई फील दैट इज द फाउंडेशन. मैं उस बुक से यदि मुझे पूछेंगे कि मैं क्या 3 चीजें लेना चाहूंगा तो मैं यही 3 चीजें लेना चाहूंगा. फर्स्ट, प्राइस इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म. प्राइस हर कुछ को डिस्काउंट करता है, राइट? सेकेंड थिंग वाज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जिसके बेसिस पे आप पैटर्न्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं. मेमोराइजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द पॉइंट इज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. आई विल ऐड one more nuance to it, that history repeats itself but every time with its own uniqueness. That is second part हो गया. और third part is that price moves in trend, right? और ट्रेंड का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उस डायरेक्शन में तब तक चलती रहेगी जब तक आप न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से उसके ऊपर कोई दूसरा चीज नहीं आ जाए जो उसके सिचुएशन को टर्न कर सके, राइट? अब यहाँ पे हम लोग इसको कोरिलेट कैसे करते हैं, राइट? पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 1 इज दैट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग. एवरी गुड और बैड न्यूज इज डिस्काउंटेड इन प्राइस द मोमेंट इट कम्स. जैसे आपने अभी ईरान वॉर में देखा कि बियॉन्ड अ पॉइंट द मार्केट स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव न्यूज. सो व्हाट हैपेंड, राइट? इट इज नॉट कि प्राइस, यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट में और ऐड करना चाहूंगा, एक कंसेप्ट ऐड करना चाहूंगा विच इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग, राइट? तो इसके बारे में पढ़िए जेसन शैपिरो के चैप्टर में, जो आपको मिलेगा अननोन मार्केट विजार्ड, राइट? ही डिस्क्राइब दिस टर्म पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग. इसका मतलब ये होता है कि जब आप ये कहते हैं कि प्राइस डिस्काउंट कर रहा है कोई चीज को, प्राइस कोई चीज नहीं है जो किसी चीज को डिस्काउंट कर सके, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली डिस्काउंट? प्राइस कोई भी जो कारण आया उसकी वजह से कितने लोग जो सेलर्स थे जो सेल करने में इंटरेस्टेड हुए, राइट? या किसी कारण की वजह से बाय करने वाले बाय करने में इंटरेस्टेड. इट इजंट द वैल्यू दैट द प्राइस, जो प्राइस में फैक्टर इन होती है, इट इज द पार्टिसिपेशन दैट गेट्स फैक्टर्ड इन इनटू द प्राइस. एक कैटलिस्ट आया और मैं उसकी वजह से बाय कर रहा हूँ, मैं बहुत बुलिश हूँ लेकिन मेरे पास 5 ही लाख रुपए हैं, तो मैं बुलिश इतना हूं कि मेरे पास 5 करोड़ होते तो भी मैं लगाता, लेकिन मेरे पास 5 लाख है, मैं 5 ही लाख लगा सकता हूँ, राइट? तो मेरे बुलिशनेस का जो एस्टिमेट है ना, जो अपर सीलिंग है, वो 5 लाख में खत्म हो जाता है वहां पे. तो एक न्यूज इस तरह फैक्टर इन होती है, जब सारे लोग उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया ना, तो दैट गेट प्राइस्ड इन, राइट? तो यहाँ क्या होता है कि वाई विल लुक फॉर निग्लेक्ट, बिकॉज मार्केट में जब भी कोई न्यूज आती है या अर्निंग्स आती है जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी प्राइस्ड इन होती है, right? So first factor, while the driving force is the news or the catalyst that you look for, the second aspect which is important is whether it is neglected and hadn't priced in that news or something, right? जो भी आपका ड्राइवर है वो प्राइस्ड इन नहीं होना चाहिए. So the most important thing which makes an EP is the neglected factor, right? कि वो neglect है या नहीं है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज उसके बाद जो रिजम्पशन ऑफ डिमांड आती है. तो आप सेटअप में 3 ही चीजें देखते हैं. आपके पीछे मूव करने का रीजन क्या है, क्या कारण हो सकते हैं. इट कैन बी इंपॉर्टेंट, इट इज द कॉज, बट आई विल से दैट इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर while when you are trading an EP, right? Because other 2 factor पे आप better trade कर सकते हैं instead of focusing just on cause why the price is moving, right? Second point is the neglected element and the third point is the price moving now. क्या आपको गैप आ रहा है या प्राइस का मूवमेंट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि एक चेंज इन बिहेवियर हुआ है क्या नहीं. तो मैं ईपी को इन 3 रूल्स के जरिए डिस्क्राइब करना चाहूंगा. अनुराग यदि आप कुछ ऐड करना चाहें तो. No, we'll go ahead. I think what we'll take in, I think, is better through some questions and examples directly.
I think that Yes. may be all. Yeah. हाँ. I Yes. I have a question. Yeah. Yeah. Please ask. As you said, the price discount everything. Am I correct? Yeah. Yeah. When a news is there, price factor in that news and either inflate or deflate because of that news. Hmm. Okay. Hmm. However, in certain cases, the news has come, like earning news has come, but stock not react well or stay Hmm. as it is. Hmm. So there's a delay in factoring in that news after 2 days, a week or so. That's my question. Okay. Okay. So that is a very interesting question and a very good question to strike. सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पे दो चीजें बहुत मैटर करती है. मैंने डिले जनरली कम देखा है 2-3 केसेस में. जब आपका स्टॉक बहुत पिटा हुआ होता है तो डिले नहीं होता है, राइट. दूसरी चीज मैंने ये देखी है उसमें कि जैसे जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा मतलब जो चर्चा में स्टॉक्स हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले अवंती फीड एक सेटअप था जो चर्चा में था. कुछ दिन पहले आप देखें तो नेटवेव एक सेटअप है जो चर्चा में है, राइट. इन सब में ईपीज बहुत अच्छे वर्क नहीं करते हैं. इवन इफ यू लुक एट इट एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से वो आपको निग्लेक्टेड दिख भी रहे हैं, राइट. दैट इज वन लर्निंग दैट आई हैड अबाउट थिंग. मतलब वो ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए. निग्लेक्टेड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्राइस कंसोलिडेट कर रही हो. वो ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिसको वाकई में कोई देख नहीं रहा हो. दैट इज अनदर फैक्टर दैट आई. अब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि 2-3 दिन बाद रिएक्शन क्यों आते हैं. इसके दो प्रोबेबल रीजंस मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ. एक क्या होता है कि यदि स्टॉक ऑलरेडी ऐसा है जो पॉपुलर है चर्चा में, तो आई बिलीव कि उसमें इंस्टीट्यूशंस को एक बेटर एंट्री नहीं मिलती है. इन दैट केस दे प्रेफर. अब होता क्या है, डे वन की एंट्री क्या होती है कि डे वन की एंट्री बहुत इमोशनली ड्रिवन होती है. हर आदमी फोमो से ड्रिवन एंट्री लेता है. ये नहीं बोलूंगा कि वो वर्क नहीं करती है, राइट. बट ये जो कंसेप्ट आया ना डिलेड ईपी का, जब हम लोगों ने ईपी का रिसर्च किया था 21-22 में, दिस वाज समथिंग दैट वी फोकस्ड ऑन एंड वी सॉ इन आवर ड्यूरिंग आवर रिसर्च एज वेल. तो उसका एक मेजर कारण क्या होता है कि लेटर ऑन जो बाइंग होती है वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड बाइंग होती है, इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट की बाइंग होती है. क्योंकि इमोशनल पार्टिसिपेंट डे वन पे उसको छोड़ देंगे उस केस में, ठीक है. सो माई पर्सनल बिलीव इज देयर आर 2-3 रीजंस. फर्स्ट, मे बी जो जो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो इन्फॉर्म्ड बायर हैं वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इनिशियल इमोशनल रिस्पॉन्स को फिजल आउट हो जाने दे रहे हैं, और डे वन पे प्राइस के लिए compete नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको जितना क्वांटिटी चाहिए वो उनको डे वन पे नहीं मिलेगा एट अ फेयर प्राइस दैट दे वांट. सो दे विल वेट, let the emotional response fizzle out, and then they will place themselves into the stock. That is why I believe that there is a delayed reaction in EPA. Got it. Also, Anurag, would क्या you होता like है ना ईश्वरी जी, not all the news are equal. Okay, sometimes participants take some decision to act. Now that decision may happen in delay of 2 or 3 reasons. Okay, या तो if it is an overtracked company, I know everything about that company. मेरे को results anticipated थे, but I need some of the other management direction or confirmation coming from it. ठीक है. आप जैसे लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखोगे ओला फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 quarters बैक इट हैड एन ईपी, डिड नॉट मूव फॉर द वाइल, एंड देन सडनली द मैनेजमेंट कम्स आउट विद अ अर्निंग्स डायरेक्शन एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अगेन. ठीक है. और एक दो एग्जांपल्स लेता हूँ. चलो एक बार चार्ट ले लोगे. लेट्स टेक ट्रेंड इन 2023 वाला. Yes. I think that was the Feb EP, if I remember. This is a very typical case आप जो बोले थे ईशू जी. हाँ, ये देखो. नाउ सी द फेब का बिग गैप अप व्हिच वाज देयर. तो हाँ, ये वाला गैप अप देखो ईश्वर जी. सी दिस वाज अ बिग गैप अप. ओके. नाउ इट हैड स्लाइड फॉलोड थ्रू ओवर द नेक्स्ट 3-4 days, बट इट मेजरली डिड नॉट डू एनीथिंग टिल द नेक्स्ट रिजल्ट. करेक्ट. यू देयर ना. आपका शायद कैमरा बंद हो गया. हाँ एक्चुअली हाँ. हाँ मैं हूँ यहाँ अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ सी दिस. यहाँ पे इट वाज अ बिग गैप अप. ठीक है. इट एक्चुअली डिड नथिंग. ओके. यहाँ पे दो था. इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द फेब एंड मार्च ऑफ 23 इवन द मार्केट वाज नॉट वेरी गुड. एक वो. सो एट टाइम्स द मार्केट में क्रिएट अ प्रेशर फॉर द लिक्विडिटी फ्लो if the earnings or whatever the underlying catalyst is not strong enough to overcome that. ठीक है.
One. So many a times, yeah, it may not be strong enough, and you need a market push or a sentiment push many a times to create an up move. One. Okay. बहुत बार क्या होता है, डिले टू एन एक्सटेंट वेयर द इंस्टीट्यूशंस आल्सो टेक सम टाइम टू डिसाइड। जैसे नेटवर्क में भी अगर आप एकदम इनिशियल आईपीओ वाले ईपी पे जाओगे, it is not necessary that everyone is looking at results at midnight and deciding to buy at 9 o'clock in the morning. There will be an under tracking and over tracking across all companies. And that is why also a delayed EPs at times or the pullback in EPs are also formed. क्योंकि the decision is not like कि 12 बजे result आ गया 9 बजे bid order डाल दो. It is not always that way. There are still humans working on an analyst level team and an investment committee or prop desk who are taking some decision making lag. One. और एक क्या होता है ना ईश्वरी जी, सी ईपी इफ इट इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, it is not only going to create one burst. Okay, now let us take this chart for example, trend ka. You see the Feb EP, that was the first time it actually had a very good result, if I remember at that time. ठीक है, I was tracking this EP. थोड़ा एक बार zoom out करोगे चलो हम्म, इधर जूम आउट करो। नहीं, I think we are still on the same. स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही क्या? हाँ, I think so. पता नहीं क्यों. But I think it's slightly better. Anyway, I think we can get the context from here. Now see this. This is pure. नहीं, I think वापस खुल गया चलो. आ, किसी और को प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन में या आपको विजिबल है? मैं देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं दिख रहा है. It's just refreshing, I think, with a lag. Yeah, refreshing is with a lag. अच्छा, ठीक हाँ है हाँ ठीक ठीक है, है. अभी आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, this is okay. Now you see this is majorly into a very deep consolidation when it actually came out in Feb. ठीक है, और काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड में ही था ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑल्सो. ठीक है. Now for an actual EP to even transpire, right, this is how it would actually look like. Now Feb में जो था, फेब का जो भी परसेप्शन चेंज हुआ था आउट ऑफ द रिजल्ट, राइट, नाउ दैट विल बी टेस्टेड व्हेन दैट विल अगेन बी टेस्टेड इन द मार्च रिजल्ट व्हिच दे केम आउट समवेयर इन मे. ठीक है. नाउ दैट मे इज कमिंग विथ व्हाट कॉन्टेक्स्ट, इट इज ऑलरेडी कॉन्टेक्ट कमिंग विथ अ कॉन्टेक्स्ट कि मार्च फेब के रिजल्ट में क्या आया था. वन. सो इट Yes. क्रिएट्स एन अप मूव. ठीक है. मई से लेके थोड़ा आगे जाना चाहिए. हम्म, ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट रिजल्ट समवेयर इन से अगस्त. ठीक है. मई से लेके अगस्त तक, या मई से लेके अगस्त तक व्हाट इट्स गॉन अप फ्रॉम नियरली अबाउट 1400 टाइप्स टू अबाउट 2000 टाइप्स. ठीक है. सो अनदर से अबाउट 45% वेयर इट हैज गॉन अप. अभी जब अगस्त या जून का जब रिजल्ट, 2000 ही है ना, सॉरी 1700, आई लुक दैट द नेक्स्ट वन. ठीक है, हम्म, 1700. सपोज इट हैज गॉन अप बाय व्हाट 300 पॉइंट्स, सो रफली अबाउट 22 ऑड परसेंट. ठीक है. अभी ये जब ऊपर गया है, एंड व्हेन द जून रिजल्ट्स आर कमिंग, दे आर अगेन बिल्डिंग अप अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मे. Correct. Abhi, when we are talking even on neglect, right? Now, most of the people may not consider neglect in August. और जब उसके आगे भी गया था, they may not consider neglect in November. But neglect is not only a stock which is at 52-week lows or is in a base or is downward trending. Neglect, you अभी जब हम लोग ने देखा था इंडियन मार्केट्स पे, it actually takes in the context of value. ठीक है. तो जब अगस्त वाला रिजल्ट आ रहा है, राइट, दे आर कंसिडरिंग कि भाई मई के रिजल्ट में जो डाला था, इज इट कंसिस्टेंट विद दैट, इज इट ओवर परफॉर्मिंग, और हैज इट ब्रोकन डाउन ऑफ व्हाट वी वर प्रीवियसली थिंकिंग. करेक्ट. फिर आगे वाले रिजल्ट में देखते हैं नवंबर में, अगेन वो थीसिस अगस्त में जो बोला था वो टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है. उसकी अग्नि परीक्षा एट एवरी क्वार्टर विल कीप ऑन हैपनिंग, नॉट विद द रिजल्ट विच केम ऑन अ YOY लेवल बट ऑन अ QOQ लेवल, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट एवरी रिजल्ट. तो जब नवंबर वाला रिजल्ट देख रहे हैं, राइट, दे ऑलरेडी हैव अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 रिजल्ट्स, ऑफ अ फेब रिजल्ट, मे रिजल्ट एंड एन ऑगस्ट रिजल्ट. सो नवंबर रिजल्ट इज लुक्ड एट द कॉन्टेक्स्ट कि भाई पहले 3 रिजल्ट में तो मैं इतना सब सोच चुका हूं. ठीक है. इज द कंपनी परफॉर्मेंस स्टिल गोइंग टू हैपन? तो यहाँ पे वो जूडियो का स्टोरी चल रहा था. There was a very massive store expansion which was going on. The margin growth and volume growth was very good. Okay. So when I'm looking at November, what am I looking at? I'm only looking कि भाई Feb और May में जो बोला था, has it been delivered? Is it on track?
and whether when I am actually making my earnings projection for the next few quarters, am I still on track with it or not? The moment that is confirmed, right, you'll then start seeing that the delay in reactions will drastically reduce. ठीक है, तो अभी आपका अगर फेब में रिएक्शन था ना, यू डोंट सी अ डिले इन अगस्त, यू डोंट सी अ डिले इन नवंबर, करेक्ट, बिकॉज द इट हैज ऑलरेडी एंटर्ड अ डिसीजन मेकिंग लूप. ओके, एंड नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस, क्या बोलो, अग्नि परीक्षा ऑफ दैट रिजल्ट ऑन अ गुड और अ बैड स्केल, एंड देन द रिजल्ट स्टार्ट गेटिंग अ लॉट मोर इमीडिएट इन नेचर. वन. ठीक है, थोड़ा आगे जाते जाना चाहिए. हम्म, लेट्स सी. ठीक है, नाउ सी दिस. अभी वापस फेब में था. फेब से लेके एक्चुअली इफ यू सी द एसेंट ऑफ इंक्रीज हैज आल्सो गॉन अप. ओके, सो अभी ये पॉइंट पे तो कभी भी निग्लेक्ट था ही नहीं, राइट, बट डज दैट मीन दैट फेब वाज नॉट एन अर्निंग्स रिएक्शन? इट ऑब्वियसली वाज. सो व्हेन वी आर लुकिंग एट निग्लेक्ट आल्सो, जब हम लोग ने भी पढ़ा था ना, दैट वाज आल्सो एन एरर दैट वी डिड एट द स्टार्ट, कि व्हेन वी लुक्ड एट द यूएस मार्केट, द बेसिक रूल वाज लाइक कि क्यूओक्यू या वाईओवाई 30% ऊपर जाना चाहिए, निग्लेक्टेड होना चाहिए. आई थिंक बोथ ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वी लर्नड बाय एक्सपीरियंस लेटर डज नॉट अप्लाई टू द इंडियन मार्केट्स. Okay, in Indian markets, since the tracked universe is a lot smaller, the perception or expectation of earnings are a lot more dominant than what the actual reported earnings are. One. ठीक है, और क्या होता है ना, since the universe is also kind of limited, या the type of catalysts that we have, ठीक है, in India are not as wide as what we have in the US markets. ठीक है, ज्यादा अर्निंग्स बीट्स आता है, या रेगुलेटरी पॉलिसीज पे आएगा, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, but even that when it comes, it is not as revolutionary, especially in say tech or biotech or pharma. Okay. So when this comes, we are looking at कि भाई within this limited universe, am I still getting new positive and reinforcements within the stock or not? तो अगर आप फेब में देखोगे, you see from फेब टू में it has again gone up. ठीक है, मई में वापस वो थीसिस का टेस्ट होता है, फ्रॉम मई टू अप इट अगेन कीप्स ऑन गोइंग अप. If you see, this is a very common characteristic in most of the persistent momentum stocks that you see. Anything which has come out from an EP and is getting tested over quarter and quarter, okay, is going to have something which is going to be a lot more, will be ending up giving you a lot more of pyramiding opportunities. You'll be able to create a big move in a big size in a big move. And these are the best opportunities that you get in the Indian markets. ठीक है, तो थोड़ा आगे जाना चाहिए. हम्म, See this. Now it keeps on going, right? Keeps on going. Your red line, I think, Chirag, is the 50 DMA. Okay. So yes, it ended up at what? Nearly about 8,400. Correct. I think किससे start हुआ था? We started at 1,400 in 23. Correct. So it is हम्म, 7x. So Abhi Ishwarji, now think when an EP even came in Feb, right? Or Feb of 23. You are right now at say October of 24 when the top was made. Okay. Within this 1.5 years, it is no way possible that anyone would have thought of the stock at 7x. Chance ही नहीं है कि आप Feb के projection में डालते थे. Correct. Correct. So what an earnings beat also does, right? Or an earnings EP does, it creates a momentum for a particular quarter. It will again be tested at the next result. Unless that result is so good that you are expecting it to carry forward for the future quarters also. But very rarely do such results come out. ठीक है, अनलेस कुछ बहुत सिग्निफिकेंट या स्ट्रक्चरल चेंज है, तभी ये होता है. बट अभी जैसे ट्रेंट इज अ रिटेल कंपनी, द बेसिक ग्रोथ ड्राइवर इज गोइंग टू बी द स्टोर एक्सपेंशन, की वॉल्यूम ग्रोथ कितना हो रहा है और अंडरलाइंग मार्जिन कितना आ रहा है. तीन चार ही ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बियॉन्ड द पॉइंट. ठीक है, इन दिस. सो एट ईच फैक्टर, ईच क्वार्टरली रिजल्ट, आई एम गोइंग टू लुक एट दिस वन. और एक आपका डीले डीपी कब आता है पता है? व्हेन इट्स अ नैरेटिव बेस्ड मूव. ठीक है, एंड अर्निंग्स बेस्ड मूव इज मच शॉर्टर टू एनालाइज एंड क्विकर टू रिएक्ट अपॉन. Whenever say there is a change in regulatory policy, ठीक है, अभी जैसे ईवी पकड़ लेता हूँ, कुछ फेम का सब्सिडी पॉलिसी चेंज हो गया. ठीक है, डिफेंस पकड़ लेता हूँ, there is a new defense budget allocation which comes. ठीक है, कवच का स्कीम डाल दिया, रेलवेज में डाल दिया, इंक्रीज माई डिफेंस बजट्स. ओके, now within that, the good part of it is it may many a times not react as strong at the start. Okay. EP or an earnings limitation is it still has a quantification figure, right? You can still put it on an Excel कि भाई X to Y जाएगा, I can put out an X ratio, तो मेरे को इतना पैसा डालना है करके for an analyst. But for the
which is a theme based or a story based EP, right? The upside is based on your human imagination. You don't know how much a company is going to get out of a defense budget, so you will take both a pessimistic and an optimistic view, and the price can vary between both. In this case, the delays can happen, one, but when the upside comes in, right, it will be a lot more proponent than what even an earnings EP will give you. ठीक है, Okay. तो अगर आप प्रीवियस 2-3 साल में देखोगे ना, लाइक द डिफेंस थीम, द पीएसयू थीम्स विच केप्ट ऑन गोइंग ऑन, अंडरलाइंग उसके अंडर क्या था, दैट वाज अ गवर्नमेंट फैक्टर ऑफ regulations or a policy change or a budget allocation which was going to increase. You could never really quantify कि किस कंपनी में कितना इफेक्ट होगा करके. That takes some time to come in, but when it starts coming in, it will get you a very sustained buy. Because now that is coming more of a structured buying mechanism. It is not coming like an EP की भाई 3 दिन में आ गया, then I am expecting a follow through for the more sustained move. ठीक है. Okay. Now Trent is obviously a much more cherry picked example. You don't get so many good stocks continuously sustaining on an EP. But अगर आप देखोगे ना, an earnings EP will not have so much of a delay unless it is very under tracked or over tracked. Okay. News based EP may have slight delay, but when it actually goes up, it goes up a lot. Got your I point. will like to add one point In here. fact, fantastic question. I was hoping I'll get a new question. This in its first question and was itself was very new. Thank you. I have And a I will follow-up. I'm sorry. Chiragji, first you complete it, then I will ask my question. आई विल आस्क एट जस्ट वन पॉइंट यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट आपकी अर्निंग्स आके इस तरह के रिएक्शंस बनते हैं ना, ये कई बार सेकेंड ईपी के लिए बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट? फर्स्ट अर्निंग्स के बाद कई बार सेकेंड अर्निंग्स इज गोइंग टू बी फार बेटर, उसके ऊपर बिल्ड करते हैं. तो आई बिलीव दैट दैट वन कॉन्टेक्स्ट इज समथिंग दैट आई हैव. Yeah, yeah. In fact, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं. Let's take Ixigo for example. Yes. Yeah, थोड़ा हाँ. Now, if I take in the previous few earnings, right? Let us say start from Feb 25. ये एक अर्निंग्स था यहाँ पे. हाँ, यू सी दैट वहां पे एक रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इट फिजल्ड आउट फेल्ड, करेक्ट. द नेक्स्ट वन ऑल्सो हैड अ स्लाइट गैप अप, फिजल्ड आउट फेल्ड. ठीक है. अभी जब एक्चुअल आपका नेक्स्ट वाला अर्निंग्स भी आया था ना, दैट वाज जुलाई 1. If when I actually went to the earnings, I saw it in the morning, it was just an ordinary one. It was nothing which was extraordinary to create a reaction. ये जब एंट्री या एग्जीक्यूशन लिया था, this was purely on price action. The follow through is actually what strengthened the conviction. But what actually set up the context for this EP was to a large extent why the previous two failed. अगर वो previous two failures नहीं हुआ होता, right? Probably on the technical point of view, this EP would still have failed. Okay, fine. Got your point. Yeah. Actually, I said I have a follow-up question which was there in the previous chart. See, suppose I have taken a position on EP setup. Okay. And after that, it had a move of around 20%. Then it went into a consolidation phase of around 20-30 days. And during that time, there are many other EPs which are coming and my margin is exhausted. I am completely in a dilemma and mental kind of that, because what I bought is not moving and neither is going up, neither is going down. And I have a limited resource. Okay. So how do I handle this? First, psychologically, second, capital wise. चलो गुड. यू हैव आस्क्ड अ पेरिनियल क्वेश्चन कि भाई मैं दोनों लड्डू भी हाथ में कैसे रखूं और तीसरा कैसे मुंह में खाते रहूं करके. वही बात है ना. ठीक है. सो अच्छा, अभी ये ट्रेंट वाला लेते हैं ईश्वरी जी. ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. चलो एक बी सॉफ्ट ले लोगे. चलो, माय फेवरेट यस. वन. हम लोग अक्सर जोक करते हैं अपने सेशन में कि यदि चार्ट में एक बुकमार्क का ऑप्शन होना चाहिए जिसमें डेट के साथ हम लोग चार्ट का नाम बुकमार्क कर सकें, तो अनुराग का ये सबसे बुकमार्क स्टॉक होगा, जैसे मेरे लिए डिक्शन था. ठीक है. अब Chirag ये देखो. हाँ हाँ. नाउ सी द मे गैप अप व्हिच हैपेंड, ईश्वरी जी. ठीक है. yeah, इट द गैप अप हैड अ स्मॉल पुल बैक. ठीक है. उसके बाद इफ यू सी द नेक्स्ट मंथ एक्शन, राइट,
इट इज स्लो. इफ आई टेक इट टिल समवेयर इन द मिड ऑफ जुलाई, तब से लेके ऐसा धीरे चल रहा है. इट्स नॉट डूइंग समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब डे टू डे जाओगे, यू विल जस्ट गेट बोर्ड बाय इट. वन. ओके. एंड दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड वेर एवरीथिंग एल्स वॉज मूविंग अप. आई वॉज फुल्ली एग्जॉस्टेड ऑन मार्जिन, बट ये रखा हुआ था. Okay. Mhm. Now, two things that will help you. You could never know. This stock was at what, around 300 something around that point. It went up nearly 3x from this. No way at 300 that you could have known that it will go at 3x. Chance in here. Okay. What you are now trying to do is you are now trying to judge a future outcome विच वॉज ऑन अ हाइंडसाइट बायस टुडे. ट्रेंड जब वो 2000 पे भी अगर स्टैग्नेट कर रहा था, मेरे को थोड़ी पता था कि 8,500 पे. अगर पता होता तो पूरा पोर्टफोलियो बेच के 1.5 साल वेकेशन पे ही चला गया होता. ठीक है. आई कुड हैव नो वे दैट आई कुड हैव डन इट. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू डू इन दिस केस? यू डू टू थिंग्स. वन थिंग इज you align your objective of that particular moment of what you want out of trading. ठीक है. Since the outcome is very uncertain and you don't know what you are going to do, see where you are particularly standing at that point in your trading life. ठीक है. Are you in need for a lot more of churn and regular profits? One. ठीक है. If that is the one, obviously you will go into a much more absolute momentum stock, then go in such stocks hoping for a persistent momentum. वेरी वैलिड. क्योंकि ये तो हम लोग ने विनर वाले चार्ट देखे ना. ऐसे तो और 99 चार्ट है जो कंसोलिडेशन में थे और डूब गए. ओके. व्हाट विल Anurag ji, क्रिएट द बायस no आउट problem. ऑफ यू इज अ चार्ट लाइक ट्रेंट और बीसॉफ्ट. आई विल शो यू अदर 10 स्टॉक्स वेयर आई वाज स्टेइंग फॉर द परसिस्टेंट मोमेंटम. कोई कहीं पहुंचा ही नहीं. अभी जैसे लास्ट वीक में बंधन बैंक में आई हैड अ बिग पोजीशन. ओके. आई मतलब काफी बड़ा था. इट वाज नियरली एन 80% साइज. बिकॉज ऑफ बंधन माय मार्जिन एग्जॉस्टेड एंड आई हैड टू टेक अ कॉल कि भाई मैं ऑल ईपी स्टॉक्स में ले नहीं पा रहा हूं, मेरे को पिरामिड करने का टाइम नहीं मिल रहा है. लेट मी ट्रिम ऑफ अ बिट ऑफ बंधन. ओके. सो दैट एटलीस्ट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अदर स्टॉक्स. जैसे कल थर्मैक्स चला था. आई वांटेड टू पिरामिड इन थर्मैक्स. आई डिड नॉट हैव द मार्जिन. So I was forced to trim my position in Bandhan. Okay, only for an opportunity cost. Is that a perfect decision? It will never be. Was it a practical decision? Of course, yes. One. ठीक है. सेकेंड, व्हाट यू आर थिंकिंग ना ईश्वरी जी, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज 340 पे एग्जिट कर दिया, डज इट मीन दैट आई विल नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टिल द नेक्स्ट 3x फॉर द स्टॉक? Mm. If it is a momentum stock, right? To start with tha na, that we are looking for the right entry. We are not looking for the right momentum. If you have a persistent stock, every week on week, it is going to come up in your scans. ठीक है. इफ यू आर इवन स्कैनिंग हाफ डिसेंटली एनफ, आपके कहीं ना कोई स्कैन में घूम फिर के आते ही रहने वाला है. ठीक है. So, तो क्या अगर आपने 340 पे सपोज बेच भी दिया, वी आर नॉट वैल्यू डिपेंडेंट ना. ऐसा थोड़ी है कि वैल्यू इन्वेस्टर का ईगो लेके बैठे कि 350 पे बेचा तो 450 पे खरीदेंगे नहीं. वी कैन बाय इट अगेन. यू आर स्टिल विद अ स्टॉप लॉस. यू स्टिल हैव अ डाउन साइड प्रोटेक्शन. Okay, so at that point, it is no way possible that you are going to take a perfect decision. If Monday, ठीक है, Bandhan gaps up, goes up a lot, I'm going to be proven like an idiot. Okay, and that is my let go. The only choice I'm taking is how big of an idiot am I choosing to be. But I'll always be an idiot in one case or the another. excellent, Anurag. Hmm. Really good. Actually, it also addressed the psychological part of the trading also. हाँ, Quite, what we are quite. trying to do, हम लोग जब rules देख रहे हैं या you know what, it's like a good answer. We are thinking of this like a science. कि हम लोग ने एक टेक्स्ट बुक बना दिया या रूल बना दिया, राइट? इट विल बी 100% राइट इन 100% ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. इट विल नेवर बी. The only effectiveness of a rule is if it will always be wrong, how less of a wrong can it be? And that you will only be able to judge in the hindsight, never in real time. अगर बंधन में पता होता, अगर 3 दिन मूव नहीं होता, आई वुड हैव मिस्ड अ कपल ऑफ पिरामिड्स बिकॉज ऑफ माय साइज इन दैट. आई कुड हैव बीन वेरी इजीली टेलिंग कि भाई मेरे को यहाँ पे साइज नहीं लेना चाहिए था 3 दिन बाद. ओके. सो व्हेन आई एक्चुअली डू माय फीडबैक रिव्यूज इन माय जर्नल, व्हाट विल बी माय इनसाइट कि ये नहीं कि मैंने बंधन में साइज क्यों नहीं लिया. Okay, it will be actually a learning for the later. Could I have identified a slowdown in the momentum in the last 4 days and prioritized my capital somewhere else? It could have been very well possible कि कल 12:30 को एग्जिट किया, 1 बजे भाग गया, ना मेरे को थर्मैक्स का पिरामिड मिला, ना इसमें साइज बचा. वेरी मच पॉसिबल.
ठीक है, बट दैट इज द लेट गो दैट आई एम डीलिंग विद इन एन इम्परफेक्ट मार्केट विद इम्परफेक्ट डिसीजंस. Good. Got your point. एंड दैट Chirag, इज व्हाट like to- मेक्स ट्रेडिंग वेरी हार्ड. यदि मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूं तो इनफैक्ट यदि आप ट्रेडिंग को देखें ना, वी ऑफन मेक अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स, बट वी आर स्टिल डूइंग वेरी गुड बिकॉज ट्रेडिंग इज अ वेरी फॉरगिविंग. बट क्या होता है कि ये साथ में खुद को कॉन्ट्रडिक्ट इस तरह से करता है कि इट इज वेरी हार्ड बिकॉज वी आर इन अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड गेम्स एंड वी वांट टू बी राइट एवरी टाइम, राइट? So no one knows that what happens next in a stock. You just act on probabilities and there is no, मतलब जिसको कहा जाए टेम्पलेट आंसर है कि नहीं मेरे पास में साइज है और वो नहीं चल रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए. इट इज द डिसीजन दैट द पर्सन टेक्स. इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजी बेस्ड डिसीजन, राइट? So that is why I will say that it is the person who has the edge. It is not the strategies that have edge, right? क्योंकि ये सब डिसीजन जो है ना, ये सब डिसीजन इंसान ही लेता है. got your point. Chirag ji and Anurag ji, you know what's the irony in the market? And the irony is, in my view, the stock what you hold doesn't move, and the stock what you hold, what you don't hold, it really goes up. Then what you sell, it goes up after you sell, and what you hold, it stay where it is. So, You think that Ishwariji, because that's what creates a lot more of memory. yes, true. Correct, because you are Yeah. more emotionally hurt by it. If that was actually true, right? I can Yeah, easily you make got. a anti-code on you and be a lot more profitable. The But problem is even the inconsistencies are random. No, but the failures are also random. That is the problem. So what actually ends up creating for memory are the negative outcomes, not the positive one. मैं Bsoft पे क्यों आते रहता हूँ पता हो ईश्वरी जी? Okay, because I absolutely. sold it halfway and it went up 2x from that point. ठीक है, तो हर दिन मैं एक बार चलेगा ना चार्ट पे. आई एग्जैक्टली टेल यू व्हाई आई रिमेम्बर दैट चार्ट सो मच, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग इमोशनल लेसन फॉर मी बियॉन्ड द पॉइंट. ठीक है, ये देख रहे हो. आई ये जो आप कंसोलिडेशन बोल रहे हो, राइट, आई एग्जैक्टली सोल्ड ऑफ रफली अराउंड द जुलाई कंसोलिडेशन. ठीक है, मेरा मार्जिन खत्म होने लगा था. जून जुलाई वाज गोइंग वेरी वेल एंड आई वाज लाइक भाई यहाँ पे साइज लेके बैठा हूँ, ये चल नहीं रहा है, बाकी सब कुछ चल रहा है, मैं ही गधा हूं क्या करके. ठीक है, तो आई सोल्ड ऑफ. ठीक है, अभी वहां से जब ऊपर गया ना अनदर 2x, यू नो व्हाट, every week or so, every 2 3 days, even though I have no position in that stock, I used to keep on checking that chart. ठीक है, hoping that it will fall down. ठीक है, and I will be validated at some point or the other. True. ठीक है, तो मेरा होल्डिंग पीरियड क्या था पता है? इट वॉज नॉट ओनली फ्रॉम मई टू जुलाई. इट वॉज नॉट फॉर द 3 months. I was indirectly also holding it in the mindset for the next 6 months when it was rising up. And this is a very common instance. Correct? Because what You you're remind. saying, na, Ishwari ji, are not trading the stock at all. From July onwards till it actually made a top, I was trading my ego. ठीक है, कि भाई ये नीचे आएगा, Oh वुड बी प्रूवन राइट, और मेरा रूल किसी तरह बच जाए कि भाई वो करेक्ट था ऑफ सेलिंग ऑन अ कंसोलिडेशन. my God. Okay. Ultimately, it's proof that even the ace traders are humans. Yeah, we are more humans. The number of keyboards I have broken, I have lost count beyond the point. इट हैपेंस, एवरी Oh my टाइम हैपेंस. God. कल भी You लगा था. कल एक एनआरबी बैरिंग्स था, होता है एवरी मॉर्निंग 9:15, राइट ईश्वरी जी? आई टेल यू, इफ यू आर ट्रेडिंग द ओपनिंग रेंजेस, ओके, एंड दिस विल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का भी प्रॉब्लम क्या होता है, दे थिंक दे हैव अ फोकस लिस्ट, व्हाई द प्रेशर आल्सो स्टार्ट्स. ठीक है, यू मेक इन अ फोकस लिस्ट ऑफ से 10 15 20 stocks, हाउ मच एवर यू हैव. ठीक है, यू विल ट्राई एंड ट्रैक इट ओवर द फर्स्ट हाफ एन आवर, 45 minutes, 1 hour. ठीक है, अगर वो चल गया, आपको एंट्री मिल गया, यू आर गुड. ठीक है, इफ नन ऑफ दो स्टॉक्स मूव, राइट, यू मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल कीप ऑन फोकसिंग ऑन देयर लिस्ट. ठीक है, एंड नॉट सी व्हाट द मार्केट इज गोइंग ऑन एट ऑल. मार्केट कुछ और चल रहा होगा, कुछ और भाग रहा होगा. ठीक है, बट यू विल बी स्टक टू दैट लिस्ट ऑफ 15 20 स्टॉक्स, और वो बोलोगे भाई मेरा लिस्ट नहीं चल रहा, द मार्केट इज डन फॉर मी. ओके, तो व्हाट स्टार्ट्स correct. हैपनिंग इज, हम लोग मतलब एक समुंदर से बाल्टी निकाल लेते हैं और हम लोग को लगता है कि वही बाल्टी में हम लोग का समुंदर है करके. दैट इज नॉट हाउ इट इज. द फोकस लिस्ट इज एक्चुअली शुड कम इन फ्रॉम व्हाट द मार्केट इज गिविंग अस, और रादर, बट वी एंड अप स्कैनिंग द मार्केट एंड दैट बिकम्स अवर फोकस लिस्ट.
करेक्ट। तो यहाँ What पे व्हाट, सॉरी, व्हाट अदर फैक्ट, हाँ, आई विल कम टू इट टाइप में, चल। ठीक है, तो एवरी 9:15, राइट, यू आर गोइंग टू फील लाइक एन इडियट ऑलवेज, बिकॉज से देयर विल बी 5 to 6 गैप अप्स इन द फर्स्ट 5 minutes. You won't be able to take all 5 6, दो तीन आएंगे मैक्सिमम. And if those two three work, you are lucky, kind of, or you are, मतलब वो luck kind of erodes, you get a lot more skilled at it after the point. But it is always going to happen कि आपने जो दो तीन लिए वो स्क्वाट हो गए और बाकी के दो तीन चल गए. No way can we ever avoid that. Only thing is, can we find out more opportunities at 9:30 onwards? Just because I've missed the 5 10 or 15 minutes, that does not mean I'll miss the next 6 hours also. I keep tracking all the stocks in my list. Hmm. Even some EPs doesn't work in the first minutes of the EP trades. They start even lower than the previous close. Hmm. And from there, after some consolidation, they run. Okay. We did a study of last quarter in our deep dive, and I learned that some stocks which does not give gap up, but still at the end of the day they hit upper circuit. Yeah. Okay. And I do keep tracking those stocks also the whole day during the EP day, and try Hmm. to take position. Hmm. 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 Correct. Uh, uh, So can we go in more flow way, the questions way, like from beginning what we should do first, and then go one by one, and we can spend every 15 minutes for maybe 3 minutes for one question, and then we move to another question. So we can cover a lot of ground. Does it sound okay, or Sure. we keep it That's like fluid and yeah, yeah, any flow, okay? as you said. So Whatever. the first category which I'm going to talk about is collection of stock names and their shortlisting. This is the first activity what we do during the EP trade. Okay, the first question is that out of the large number of stock with results the previous day, how do we reduce them to a manageable and meaningful watch list? Okay. Okay. Chirag, So you want first to take? thing, Sorry. yes, first thing that we do कि इसमें आप बेसिकली 908 में हम लोग क्या करते हैं, देयर आर टू थ्री थिंग्स दैट वी डू इन ईपी. ईपी इज रैदर वेरी इजी टू मैनेज, राइट, अनलेस देयर आर सम डेज जबकि बहुत ज्यादा रिजल्ट्स होते हैं, राइट. सिंपली आई सॉर्ट इट हियर एट 908, ठीक है. और इसमें से मैं टॉप के स्टॉक्स चुन लेता हूँ, यूजुअली अप टू 3%, ठीक है. कभी कभी यदि कम स्टॉक्स रहते हैं तो थोड़ा नीचे भी जा सकता हूँ. यदि मार्केट नेगेटिव ओपन हो रहा है तो इवन 2% इज इक्विवेलेंट टू 3% इन अ गुड डे. इन अ नेगेटिव मार्केट 2% इज इक्विवेलेंट टू 3% इन अ गुड डे. और कभी जब ज्यादा होते हैं तो इवन थोड़ा हायर भी ले सकते हैं, बट जनरली 3% इज द रूल. अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको आई विल ऐड ऑल सिलेक्टेड टू Chirag ji, माई वॉच लिस्ट. Chirag ji, I'm sorry, हाँ, prior to doing that, do you filter your stock with market capital or something like you will trade only in वो सारा this किया many हुआ है ना, market? टोटल यूनिवर्स जो है ना, तो इसमें सारा किया हुआ है. सो मैं वही 1000 वही करोड़ से actually कम के स्टॉक्स नहीं लेता हूँ, 5% सर्किट के स्टॉक्स नहीं लेता हूँ, 2 लाख करोड़ से ज्यादा के स्टॉक नहीं लेता हूँ, हाँ, ठीक है. exactly. तो ठीक है. तो ये फिल्टर पे, और कम से कम 5 करोड़ टर्नओवर जो मैं सोच रहा हूँ कि बढ़ा के 10 कर दूं, क्योंकि एनीवे आप ट्रेड करते हैं तो वो 60 70 80 करोड़ का रहता ही है. तो 10 तो कम से कम कर ही सकता हूँ. तो आई थिंक दैट इज एन एडिशनल चेंज दैट आई एम थिंकिंग ऑफ, ठीक है. तो ये सारे को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा पोर्टफोलियो में, ठीक है. देन आई विल गो टू दिस पोर्टफोलियो पार्ट यहाँ पे, ठीक है. एंड देन आई विल स्टार्ट लुकिंग एट द स्टॉक्स, ठीक है. अब यहाँ एक चैलेंज भी आता है जो मैं बताऊंगा, ठीक है. जैसे अब ये सिम्प्रो हो गया, राइट, इट इज गैपिंग अप, राइट. अब ये आप देख रहे हैं कि अर्निंग्स नहीं है पीछे, यू आर सीइंग दैट इट हैड ऑलरेडी रन अप, राइट. आपको अर्निंग्स यहाँ पे आ रही है, मार्किंग है या नहीं, इससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है. The point is that is it a start of momentum or it isn't a start of momentum? So it is not a start of momentum at this point. At this point, it was a start of momentum, right? तो ये चला गया आपका, ठीक है. अब विजया देखिए, ठीक है. अब विजया आप देख रहे हैं तो थोड़ा पीछे जाके देखिए कि does this looks good as a trade.
So I said to you three things, right? There is a reason for the stock to gap up. There is a news or earnings or something. The second part is neglect. So in the 7 minutes that you get from 9:08 to 9:15, that is the period when you शॉर्ट लिस्ट योर स्टॉक. जो भी यहाँ 5-10 स्टॉक 15 स्टॉक आते हैं ना, आपको उसको शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से हाई पोटेंशियल कैंडिडेट बाहर कर लेंगे. ठीक है. क्या ये हाई पोटेंशियल कैंडिडेट है? आई विल से नो, इट इजंट अ हाई पोटेंशियल कैंडिडेट, नॉट समथिंग दैट इज वेरी लुक्रेटिव. आई विल रिमूव दिस. आई डोंट थिंक इवन दिस इज लुकिंग टू गुड एट दिस पॉइंट, क्योंकि सेकेंड डे 2 एंट्री के लिए ठीक था, बट डे 1 के लिए सही नहीं है. ठीक है. अब यहाँ एक चैलेंज क्या आता है, ये मैंने आपको गैप अप के तरीके से दिखाया है बिकॉज अभी एंड ऑफ द डे हो चुका है, राइट. होता क्या, एक बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ चले जाएं. होता क्या है कि पोर्टफोलियो में आपके कुछ स्टॉक्स हैं जो आपने ऑलरेडी चुन के रखे हुए हैं. ठीक है. तो इस सेकेंड टाइम ऐड करने से वो अलग से ऐड नहीं होता है. तो एक बेटर ऑप्शन क्या होता है, यहाँ टोटल यूनिवर्स में जाइए, 9:08 पे इसको सॉर्ट कर लीजिए ऐसे. ओके. राइट. यदि 9:08 पे सॉर्ट करेंगे ना, तो ये आपको गैप्स सॉर्ट करके दिखाएगा, हाई टू लो. राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वहां पोर्टफोलियो में चूंकि आपने ऑलरेडी स्टॉक्स ऐड किए हुए हैं ट्रैकिंग में ना, तो वो आपको दोबारा ऐड नहीं होगा. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू मिस द स्टॉक टू सम एक्सटेंट. लेकिन यहाँ यदि आप टोटल यूनिवर्स में करेंगे, तो यदि इसमें जो जो गैप अप्स होंगे वो आपको बहुत इजीली दिखेंगे यहाँ पे, जैसे इस तरह के गैप अप्स में. थर्मैक्स. अब देखिए थर्मैक्स को क्यों चुनना चाहिए. क्या थर्मैक्स एक नेग्लेक्टेड स्टॉक है? यहाँ तक पूरा नेग्लेक्टेड था, कोई डाउट नहीं है, राइट. यहां से आपने एक एक्सपेंशन देखा जो आप बोल सकते हैं कि नॉट सो नेग्लेक्टेड है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव अ 15 डेज 10-15 डेज काइंड ऑफ कंसोलिडेशन बिफोर द मूव स्टार्टेड, राइट. तो ऐसा नहीं होता है, एक डाउनवर्ड डिक्लाइनिंग स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता आईपी के तौर पे कभी भी. जब वो हल्का सा एक्सपेंशन करके एक छोटा बेस या ओवरऑल पूरा बेस इस तरह की चीज बनाता है ना, तो दैट वर्क्स फार बेटर एज एन ईपी in that case. So this is a very good example to trade as an EPA, right? ये वाला. अब सूर्योदय चलने के लिए अच्छा चला है, लेकिन चैलेंज क्या है ना, कि ये थोड़ा रन किया हुआ स्टॉक है, इसमें बहुत बड़ा कंसोलिडेशन नहीं है, तो आपको थोड़ा डाउट होगा कि मुझे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसमें, राइट. तो इस तरह का रहता है. अब संडुमा, दिस इज गुड. why this is good? because again the same thing is apply. consolidation, move, और फिर consolidation and then the move is starting. तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे प्रदीप पांडे बोलते हैं, इफ यू कीप ऑन ट्रेडिंग फॉर 2-3 क्वार्टर्स, इवन गैप रोज भी ट्रेड कर सकते हैं सेम प्रिंसिपल पे. तो ईपी है या नहीं है, यू डोंट, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप गैप रोज भी ट्रेड कर सकते हैं. धीरे धीरे इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी कि आप क्या देखना चाहते हैं, और 7 मिनट इज इनफ टू शॉर्टलिस्ट द स्टॉक. मैं तो अर्निंग्स क्या आई थी वो अब देखता भी नहीं हूँ, मैं जनरली उसको गैप के तौर पे ट्रेड करता हूँ, एंड आई गेट गुड ट्रेड्स आउट ऑफ दैट. ठीक है. आप अर्निंग देखते ही नहीं, करेक्ट? या अर्निंग्स देखने का कोई काम नहीं है ना, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कीजिए ना. आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट्स फाइन. या प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड कर सकते हैं. मैं इनफैक्ट मैं गैप को डे इन एंड डे आउट भी ट्रेड करता हूँ, कोई जरूरी नहीं अर्निंग सीजन में ही ट्रेड करने का. सो देयर आर न्यूज बेस्ड टीपीज, राइट. तो एक ऑप्शन क्या रहता है, आपने एक बार गैप ट्रेडिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट थिंग टू ट्रेड. क्यों टाइम एफिशिएंट होता है? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है पहले दिन. आपको 9:08 पे टर्मिनल पे आना है, शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, देख लेना है गैप कहाँ कहाँ हो रहा है, सॉर्ट देम आउट, उसको देख लीजिए उसमें से क्या क्या. आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं उसमें कई बार. ठीक है. लास्ट ईयर के कुछ अच्छे ट्रेड्स थे, मतलब लास्ट ईयर से पहले ही बार में, जैसे मैप माई इंडिया था, बहुत अच्छे ट्रेड्स थे. जैसे ये सब कुछ बहुत अच्छे ट्रेड्स मैंने पकड़े थे. ये टोटल 16-17 आ गया था ये 2 दिन के अंदर में. इस तरह का कोई ईपी नहीं है, अर्निंग नहीं है, राइट. जस्ट द कॉन्टेक्स्ट, यू सॉ द कॉन्टेक्स्ट, यू पंच द ऑर्डर, द स्टॉक मूव्ड अप, राइट. तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी गैप इज अ वेरी गुड वे टू स्विंग ट्रेड इफ यू वांट टू स्विंग ट्रेड. इवन व्हेन यू आर नॉट इन अ, मतलब अर्निंग सीजन में नहीं है, तब भी कर सकते हैं इसको. सो दैट इज द बेनिफिट वहां पे. आपको बस समझिए कि दिन का 1 घंटा निकालेंगे ना, तो यू विल डू वेरी गुड इन ट्रेडिंग, यदि आपने हैबिट डेवलप कर ली. और यदि आप ट्रेन कर रहे हैं ना खुद को ईपी के लिए, तो दिस इज अ वेरी गुड ईयर. आप सिर्फ अर्निंग सीजन का वेट मत कीजिए, साल भर गैप्स ट्रेड कीजिए, और उसमें गैप्स ट्रेड करते रहे, खुद ही आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन जाएगा. मुझे क्या चाहिए, मुझे पीछे एक फोर्स चाहिए जो प्राइस को ऊपर कर सकती है. वो फोर्स अर्निंग की हो या न्यूज की हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट. जब आप नॉन ईपी गैप की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आप आर वॉल्यूम भी देते हैं टू ऐड एक्स्ट्रा ना ना फ्यूल?
कोई आर वॉल्यूम वगैरह बहुत ही बकवास कंसेप्ट है। उतना देखिए क्या होता है ना, आप अपने फर्स्ट मिनट के, जब आप बहुत फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं सुबह के समय में ना, यू नीड टू रिड्यूस योर डेटा पॉइंट्स, है ना। हम लोगों को कोशिश क्या करनी चाहिए, हम लोगों को देखिए इलेबोरेशन और रिडक्शन एक पार्ट है लर्निंग का, राइट। तो जब आप इलेबोरेट नहीं करते किसी चीज को ना, तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सबसे पहले कोई भी काम जो आप कर रहे हैं ना, तो आप उसको जितना एक्सपैंड कर सकते हैं, जितनी चीजें डाल सकते हैं सबको डाल दीजिए। फिर उसमें लेयर बाय लेयर कैंची चलाना शुरू कीजिए, उसको छोटा करना शुरू कीजिए, तो टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है। पहले जब मैं बहुत जूनियर ट्रेडर हुआ करता था, बहुत नोविस था ना, तो मैं हर चीज एक्यूरेट रखता था, एक्यूरेट क्वांटिटी, 1 आवर से ज्यादा स्लिपेज नहीं आना चाहिए, आई विल फील बैड, राइट, एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेट। ठीक है। आज के डेट में ऑर्डर पंचिंग जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि आप मेंटली बस कैलकुलेट करते कि मेरा 9,800 शेयर नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप बस 10,000 पे ऑर्डर डाल रहे हो वहां पे सीधे। ठीक है, 5,000 पे ऑर्डर डाल रहे हैं। सो यू डोंट हैव दैट मच टाइम, दैट मच लग्जरी टू एग्जीक्यूट द एग्जैक्ट नंबर। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टिल द टाइम यू आर गेटिंग द इफेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड। यू कैन बी imperfect एंड यू कैन मेक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। तो यहाँ टाइम ऑप्टिमाइजेशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द confirmation that R-wall may give, but I will say that R-wall is an absolute bullshit concept, उससे कोई फायदा नहीं होने का है, राइट। इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। Okay. कंफर्मेशन कुछ नहीं मिलेगी, आपका समय जरूर खराब कर देगा वो, इतना जरूर है। और आपको पहले 2-3 मिनट में कुछ आल आने नहीं वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फेक काइंड ऑफ अ फिगर। द फॉलो आह, थ्रू वॉल्यूम्स आर एक्चुअली गोइंग टू कम अ लॉट लेटर। ठीक है, सो जितने व्हाट वी आर। फील्ड लिपि निकाल के देख लीजिए, जितने फील्ड लिपि है ना निकाल के देख लीजिए, आपको सब में आर वॉल दिखे। Yeah, I feel So I EP. have one question. तो उसमें like can we check the volume bars? अगर volume bar like say मैं ओवर भी 15 मिनट ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे पहले 15 मिनट का वॉल्यूम ज्यादा है, then I can consider okay देखो the good. नवनीत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So I'll tell you what, तुम्हारा वॉल्यूम जब होता है ना, इट्स नॉट ओनली द वॉल्यूम, इट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑल्सो। वॉल्यूम इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी एस्पेक्ट टू योर प्राइस। ठीक है, इवन अ फेल्ड ईपी राइट इज गोइंग टू हैव अ हाई वॉल्यूम इन द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, आपका कब आएगा ना वॉल्यूम, आई कांट थिंक, इनफैक्ट ये जितने भी चार्ट्स अभी चिराग अभी स्क्रॉल कर रहा था ना, उसमें से वॉल्यूम हाइड कर दो। ओके, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट डिसीजन मेकिंग इन योर्स। एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, राइट। देयर इज अ वेबिनार दैट आई हैड डन ऑन माय ओन चैनल, जो पर्सनल चैनल था, उसमें वॉल्यूम पे एक वेबिनार था मेरा, राइट। वेंट वॉच दैट वेबिनार। तो हुआ क्या था कि उस वेबिनार में मैंने एक का कंसेप्ट जो इंडियन मार्केट में देखा ना, जब भी प्राइस ऊपर जाए यू विल ऑलवेज हैव अ वॉल्यूम, प्राइस नीचे जाए यू विल ऑलवेज हैव लेस वॉल्यूम। वॉल्यूम का कोई इंटरप्रिटेशन में योगदान ही नहीं किसी भी प्रकार का। इट इज एन एब्सोल्यूट रबिश टिल द टाइम, टिल द टाइम it doesn't gives you a contra insight, right? What is a contra insight, right? हाई वॉल्यूम सेलिंग आ रही है, राइट, लेकिन वो हाई वॉल्यूम सेलिंग ज्यादातर केसेस में फेक सेलिंग होती है। वो देखना पड़ता है कि हाई वॉल्यूम इज मतलब लो वॉल्यूम सेलिंग इज नॉट लेस नेगेटिव, राइट। अब क्या होता है, कुछ जगहों पे वॉल्यूम का इस्तेमाल आप वेटेज के लिए करते हैं, कहीं आप देख रहे हैं कि ऊपर प्राइस जा रहा है लेकिन उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, देन दैट इज अ केस जहां आप थोड़ा यूज कर सकते हैं उसको कोई कॉन्ट्रा इनसाइट के तौर पे। अदरवाइज देयर इज एब्सोल्यूट नो यूज ऑफ, यू कैन से, वॉल्यूम का कोई इस्तेमाल नहीं है। One good question, what you use, सिर्फ actually liquidity filter कर दो, and that is not related to volume one. Also, Dinesh, I think has an interesting question कि will it when institutions enter, will it not be reflected by heavy volumes? What happens now? How heavy is it, Dinesh? Okay, because in the first 15 minutes, you're anyway going to cross for sure your average daily turnover volume. If you're talking heavy volumes, तुम क्या सोच रहे हो? You're thinking कि last 20 day एवरेज वॉल्यूम कितना था, या लास्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम का था कितना था, और उसका कितना एक्स ज्यादा होना चाहिए। ओके, ऑन एनी फेल्ड ईपी it is going to be higher than your average, or even on successful EP it is going to be higher than your average. Okay, if in all result days your volumes are going to be higher than average, then is it really material of how higher it is? It may be 10x higher, it may be 15x higher, or 20x higher. Will it add on to your decision making?
इट्स लाइक वो एक वो दामोदरन का कोट था, इफ एवरीवन हैज एआई नो देन नो वन हैज एआई. So if every earnings post day is going to have a higher volume, okay, then how will you bifurcate your decision making based on volume? Will you choose कि भाई कौन सा 4x ज्यादा है, कौन सा 2 that is better than a 2x higher volume? That won't work, no? और एक पॉइंट और भी यहाँ पे ऐड करूंगा कि व्हेन यू वांट टू बाय विथ इंस्टीट्यूशन, यू वांट टू बाय इन द फर्स्ट मिनट, फर्स्ट 5 मिनट, राइट? आप यहाँ जब आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन के लिए वेट करें, यू आर वेटिंग फॉर द वॉल्यूम टू कम, देन यू विल बाय, राइट? सो यू आर बेसिकली बाइंग लेट इफ यू Yeah. सी. अब जो बेस्ट टीपीज होंगे वो तो उतना वॉल्यूम आएगा तो वो ऊपर भी चला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है और प्राइस नहीं बढ़े. दैट इज अ फार मोर डेंजरस थिंग टू हैव, राइट? ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, प्राइस नहीं बढ़े, दैट इज अ डेंजरस थिंग टू हैव, राइट? नाउ द पॉइंट इज यू वांट कि प्राइस बढ़े जबकि वॉल्यूम आए, तो आप कहाँ बाई करेंगे? यदि आप कंफर्मेशन के लिए वेट करते रहेंगे, you will end up buying late, you will end up buying expensive, and you will end up buying away from the cause, right? So don't do that. It doesn't add any value. Even जो concept भी है ना, 9 million वॉल्यूम का जो concept बॉन्डे ने बनाया हुआ है, एक तो 9 million वॉल्यूम का concept ही गलत है. अभी आप जाकर के कोई भी 20 रुपए का स्टॉक पकड़ लीजिए, ठीक है, कोई भी पेनी स्टॉक, वो बहुत हेवी वॉल्यूम पे ट्रेड होता है, राइट? 9 मिलियन आप स्टैटिक ले ही कैसे सकते हैं? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एनीवन शुड आस्क. टर्नओवर इज करेक्ट, आप टर्नओवर इंक्रीज देख सकते हैं, रिलेटिव वॉल्यूम देख सकते हैं, सब कुछ फिर भी चल सकता है इफ यू वांट टू यूज. बट दैट 9 मिलियन वॉल्यूम फिगर जो है, ये 9 मिलियन का, कोई पहले एक स्टॉक होता था जीएमआर इंफ्रा और जीवीके इंफ्रा, 8 रुपए 10 रुपए की कंपनी थी, ठीक है? ये 2014 की बात कर रहा हूँ, आज की बात भी नहीं कर रहा हूँ. उनका वॉल्यूम होता था 2-3 करोड़ हर रोज का, राइट? तो अब तो आप बोलेंगे तो 9 मिलियन वॉल्यूम से ज्यादा है, राइट? और आप बोलेंगे कि एमआरएफ में वॉल्यूम ही नहीं है, राइट? कोई भी अदर स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं. ये कंसेप्ट जिस तरह से प्रेजेंट किया गया ना, इट इज नॉट अबाउट वॉल्यूम, राइट? और यूएस में और क्या होता है कि उनमें बहुत सारा प्री ओपन का भी होता है, आप बात का भी मार्केट देख सकते हैं. इंडिया में वो सब चीजें नहीं है. वहां से सीधे कंसेप्ट इंपोर्ट करके यहाँ चिपकाइए मत. कंसेप्ट विल वर्क बट द प्रोसेस विल नॉट वर्क, राइट? आर वॉल्यूम से कोई फायदा नहीं होना है. आर वॉल्यूम इज एब्सोल्यूट रबिश. और मैं आपको गारंटी देता हूँ, लोग क्या दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं कि देखो ये सक्सेसफुल चार्ट, इट इज अ चेरी पिक्ड एग्जांपल. इलेट वेव जहां चलेगा वहां का चार्ट निकाल के दिखाएंगे, हेड एंड शोल्डर जहां चलेगा वहां का चार्ट निकाल के दिखाएंगे. मैं आपको बोलता हूँ उल्टा स्टडी कीजिए, सारे फेल्ड स्टॉक, फेल्ड ईपी निकालिए. डोंट ब्रिंग सक्सेसफुल ईपी, सारे फेल्ड ईपीज निकालिए. उन फेल्ड ईपीज में पहले के 5-10 मिनट के वॉल्यूम देखिए. Then you will see each and every failed EP that had moved up, it always had volume before failing. तो आपको एज क्या मिला? Every failed breakout will always have volume, right? There is no edge in looking at volume figures at all. Some charts की और delivery percentage सब देखोगे, these are not decision points you can take at 9:20 in the morning. Take in the real time market. Don't add on factors which are not going to help your decision making real time. That's मैं simple. डिलीवरी परसेंटेज का भी देखता ही नहीं, चाहे वो हाँ. एंड ऑफ द डे हो, ड्यूरिंग द डे हो. क्योंकि क्या होता है, ये सब जितने डिसीजन पॉइंट्स आप ऐड करेंगे ना, आप प्रोसीजरल मेमोरी से, आप क्या चीज से डर, एनकाउंटर योर फियर फर्स्ट. आप डरे कि एक फेल्ड ट्रेड होगा, क्या डिलीवरी परसेंटेज देखने से वो फेल्ड ट्रेड कम हो जाएगा? आपके पास कोई क्वांटिफाइड डेटा है जो ये बताए कि डिलीवरी परसेंटेज देखने से आपके फेल ट्रेड की तादाद कम हो जाए? आई विल से कि किसी के पास ऐसा कोई डेटा नहीं हुआ. ये सब वहम बना हुआ है, जैसे काली बिल्ली रास्ता काटती है तो आपके साथ अनिष्ट होता है. ये इस किस्म के अंधविश्वास हैं जो पूरे टेक्निकल एनालिसिस में भरा हुआ है. यू नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल द unnecessary supportive decision point. Just focus on what you see, and जो आपके सामने चार्ट पे, that is only what is real. Everything else is fake. उसके ऊपर अपनी आंख को ट्रेन कीजिए. You will be able to execute orders, and that is what matters. Nothing else matters. Trading बहुत माफ करने वाला बिजनेस है. You can do a lot of blunder and you need one trade to recover everything, right? इसलिए यदि आप 50 बार फेल भी हो रहे हैं ना, you just need 5-10 trades to recover everything. Don't worry about failure.
ट्रेडिंग को सिक्का उछालने की तरह देखिए। यदि टेक्निकल एनालिसिस कुछ कंट्रीब्यूट करती है तो मुझे ये बताइए कि टेक्निकल एनालिस्ट, इतने सारे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनका सक्सेस रेट 30%, 40% क्यों होता है? क्योंकि आप सिक्का भी उछालेंगे तो 50% विन रेट आएगा उधर। राइट, गुला मैगी 30% विन रेट के साथ पैसा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? उनको या तो पैसा नहीं बनाना चाहिए यदि वो बुरे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, या यदि वो अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं और टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बना रहे हैं तो उनका सक्सेस रेट 70% होना चाहिए कम से कम। तब आप बोलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है उनके सक्सेस में। दोनों चीजें वैलिड नहीं। पॉइंट इज ही इज मेकिंग मनी ऑन आरआर। देयर इज ओनली वन एज इन मार्केट एंड दैट इज कॉल्ड आरआर। उसके सिवा कोई चीज यू कैन मेक एब्सोल्यूट। आप रद्दी ट्रेडर हो सकते हैं, रैंडम एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, बट इफ योर आरआर इज पॉजिटिव यू विल एंड अप मेकिंग। दैट इज वन थिंग दैट मैटर्स इन मार्केट। इसलिए फेलियर से डरिए मत। फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। एवरीवन फेल्स, योर बेस्ट ट्रेड्स फेल्स। इट इज जस्ट, यू कैन से कि इट इज जस्ट हाउ इट इज। जस्ट फोकस ऑन आरआर। ट्रेडिंग बहुत पार्डन करती है। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक एंड रिकवर एवरीथिंग। Okay. Thank you. To take away, don't be afraid of risk, number one. And it's important to debunk the myth. Without debunking the myth, you cannot grow. So thank you for debunking Don't be some. afraid of risk, नहीं, don't be afraid of failure. Yeah, राइट, आई don't विल be लाइक टू afraid. ऐड, दोनों में अंतर होता है। राइट, फेलियर हम लोग बहुत एम्फेसिस देते हैं कि आखिरकार मैंने ट्रेड लिया तो ट्रेड स्टॉप आउट कैसे कर सकता है मेरे को, और कैसे मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ कि मेरे को स्टॉप आउट ना करे। ठीक है, तो वो आपको True. स्टॉप आउट करेगा ही। आपको भगवान होना पड़ेगा स्टॉप आउट नहीं होने के लिए। हर ट्रेडर True. खराब पीरियड में उसके स्टॉप्स लगते हैं, ड्रॉडाउन में जाता है, मैं भी जाता हूँ, अनुराग भी जाते हैं, और इस दुनिया का हर रियल ट्रेडर ड्रॉडाउन में जाता है। देयर इज नो नथिंग, हर ट्रेडर फेल होता है। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। आप बोलेंगे कि एक क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है, ठीक है, वो हर बार सेंचुरी मारेगा, पॉसिबल है? कोई Yeah. क्रिकेटर इस दुनिया में, इतने क्रिकेटर हैं, मुझे नाम बताइए जो किसी भी एक क्रिकेटर ने कभी जीरो नहीं बनाया। राइट, यू कैन हैव गुड फॉर्म, यू कैन हैव बैड फॉर्म। विराट कोहली 5 साल तक आउट ऑफ फॉर्म रहे, तो इससे क्या उनका क्लास खराब? So every trader goes through drawdowns, every trader goes through phases of frustration. That is how real trading is. It is not easy, despite कि trading एक बहुत pardon करने वाला business है. But if you have an ego और you believe कि study से आप trading में failure rate को एकदम contain कर देंगे, there must be something जो आप miss कर रहे हैं, कोई ना कोई signal होगा जिससे आप failure को prevent कर देंगे। नहीं होता है। Execution की efficiency पे focus कीजिए, faster execution पे focus कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए अपनी ट्रेडिंग को, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर, मतलब वो घोस्ट देखने की तरह कि हाँ उसमें से कोई सिग्नल निकलेगा जो आपको बताएगा कि हाँ इससे आपका सक्सेस रेट आता रहेगा। इट इज मोर अबाउट पंचिंग ऑर्डर्स देन अवॉइडिंग। Okay. राइट। Chirag ji, I have a small follow-up question. Just small हम्म follow-up question. How हम्म fast is fast? हाउ फास्ट इज फास्ट? नाउ दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइट, क्योंकि अब मैं आपको एक ही पॉइंट यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आई डोंट नो हाउ फास्ट इज फास्ट। राइट, आई विल जस्ट से कि जिसमें मैं, यदि मुझे क्वांटिटी कैलकुलेशन में समय लग रहा है और मैं मेंटल कैलकुलेशन से उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो आई कैन बी अ बिट फास्टर। राइट, देयर इज नो मेजर ऑफ हाउ फास्ट इज फास्ट, but if I feel that there is an unnecessary step which is not bringing a lot of difference to my trading, I can eliminate that and attempt to be a bit faster in my execution. ऐसा नहीं कि Let मुझे यस Yeah, यस let me rephrase these questions in a different dimension. Say, for example, in most of the cases, if I see most of the EP traders look for 1 minute breakout minimal. Okay. So my question is that why not 30 seconds breakout? Okay. ठीक है, मैं मानता हूँ। हाँ यस हाँ यस यस, हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज। So I'll tell you, Ishwari ji, why do I go into a lower time frame on EP? Okay, there's only one particular reason. If you go on a higher time frame, right? Take a 15 minute, take a 30 minute. Okay, Just 30 your minutes. data points in an first few minutes of an EP are going to be very high. The transaction volumes are higher, the ticks are higher. Okay, it does not make sense to go on a 1 minute time frame on a random stock at noon. ठीक है, आप ईपी पे पहले इनिशियल मिनट्स में क्यों जा रहे हो? बिकॉज इट इज वेरी वॉलेटाइल।
Correct. The Like, moment you if, start huh? sorry, what I'm saying, I'm not saying 30 minutes, I'm saying 30 seconds. Yes, yes, I'm coming there. Yes, yes. 30 seconds also. Okay. Abhi, why do I take in 1 minute, 30 seconds? You can take in 30 seconds. Ab 5 second le lo. One tick level data le lo. That is not really relevant. What you're using is, आप time frame क्यों use कर रहे हो पता? You are just trying to get as precise in an entry as possible. That's it. ओके आप डेली क्यों यूज करते हो वीकली क्यों यूज करते हो ठीक है अगर आपको ट्रेंड डेली पे दिख रहा है वो वीकली पे भी दिखने ही वाला है अगर आपको इंट्राडे पे दिख रहा है वो डेली पे दिखने वाला है आवरली पे दिखने वाला है सम ऑफ द अदर टाइम फ्रेम एट द लोअर levels are you going to find your character of a breakout or a pullback or a breakdown first. Okay. The higher of a time frame you go, you are just waiting for a more confirmation that it has sustained. That's it. Correct. If I go in for a 5 minute or a 15 minute or a 10 minute, which I normally use, okay, I may lose out on a lot of initial move that is happening in the first 5 minutes. Why? Because the tick levels that are coming in the initial parts are very high. ओके इट इज वेरी एप्ट तो अगर आप एक्चुअली जाओगे ना अभी तो जैसे आई थिंक काइट या ट्रेडिंग व्यू भी स्टार्टेड गिविंग ऑन सेकंड लेवल डेटा गो देयर इफ इट मेक्स यू कंफर्टेबल okay so there are so many prop desk traders who are not even who are actually going on seconds. Okay, the Okay. only objective is what? It is to get as precise of an entry as possible. Okay, what is the con of it? You will think कि अब मैं जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा उतना मेरे को नॉइस लेवल डेटा ज्यादा आएगा वैलिड Yes. ठीक है Mm. बिकॉज अगर दो तीन भी ऐसा नॉनसेंस किसी ने बेवकूफ जैसा एंट्री डाल दिया दैट इज गोइंग टू स्पॉइल माय चार्ट ओके Right. that can happen even on a 1 minute chart that can happen on a 5 minute chart if that noise level is a bit higher I'll see that noise level on a 15 minute also. First 1 minute is purely because, frankly, I can go lower, I can go higher. When we started backtesting, the procedural memory for me got developed at 1 minute. So जब हम लोग ने start किया था ना 9:16 क्या हो रहा है 9:17 क्या हो रहा है 18 19 20 we started making each minute level bifurcations. Could we have done it 30 seconds? Yes. Could we have done it 5 seconds? Obviously yes. We just chose a 1 minute while the procedural memory got developed, but very valid कि आप 30 seconds पे भी ले सकते हो if it is suiting you. One many prop desk traders actually do that. Many algos don't use a minute level chart; they use a tick level chart. Okay. Okay, very comprehensive, very और I think all-round that was a reply. very You good covered a lot. question. और एक जो था of just a second, I missed that one good question I thought I'll take. Uh, Sorry, I think I missed it somewhere within the chat. Sorry, ले लो चिराग ईश्वरी जी ले लीजिए. I think I missed it somewhere in between. हाँ I think Nakul has a question. हाँ. Also, yeah, yeah, your question on how fast is fast, correct? Now for some people, right, even a 15 minute chart can be fast. For some, even most many people मेरे को जो याद है बोलते हैं, भाई मेरे से डेली भी नहीं देखा जाता है मैं तो वीकली देखता हूँ ठीक है So, कुछ ट्विटर वाले धुरंधर होते हैं जो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट करके डालते हैं ओके monthly. या सो अगर आप देखोगे ना द लास्ट ईयर दैट वाज लाइक ईयरली ब्रेकडाउन जो क्वार्टरली पे डाल के रखा था मल्टी ईयर ब्रेकआउट वो सब आते थे ना चार्ट्स सो Yes, yes. मतलब यार आई एम नॉट एज स्किल्ड एज दोस बट होगा क्या ईश्वरी जी ओनली पॉइंट ऑफ दैट राइट हाउ फास्ट इज फास्ट does not depend on the chart at all. It purely depends on us. How fast is your hand-eye coordination? ठीक है एंड हाउ फास्ट आर यू एबल टू पुट इन योर ऑर्डर्स वेल इफ यू आर डूइंग इट मैनुअली ओके अगर आप कोई ब्रोकर के पास जाओगे ना नॉर्मली एक बोल्ट ट्रेडर पे एक 20-30 साल का लड़का बैठा होगा ठीक है इफ यू गो इन द 90s या 20 साल पहले व्हेन ट्रेडिंग वाज अ लॉट मोर मैनुअल एंड डन इन ब्रोकर ऑफिसेस कैलकाटा में ठीक है यू विल हैव अ ब्रोकर ऑफिस 5 या 6 बोल्ट ऑपरेटर बैठे होंगे देयर विल बी 20 पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड हिम शाउटिंग ऑर्डर्स okay so that Yes. 25-year-old guy has to not only type order correctly in the right account but also needs to identify कि भाई किसका आवाज कौन बोल रहा है करके कहीं Agree. चिराग ने So, ऑर्डर बोल दिया मेरे अकाउंट में डाल दिया तो मैं गाली देने वाला हूं उसको ओके 100%. so what is it how fast is purely dependent on a very stupid thing of being a typist ठीक है तो अभी जैसे मैं ईपी ट्रेड कर रहा हूं ना
आई कांट एवर डू इट ऑन अ मोबाइल, मेरे को जमता ही नहीं है ऑर्डर डालने के लिए, ठीक है। आई आपकी नीड माई आवाज थोड़ी कट रही लैपटॉप। है, क्या मेरे को ही लग रहा है किसी और सबको लग रहा है? आप ही को लग रहा है नकुल, ये ईश्वरी जी, मुझे आ रही है बात। ओके ओके, अच्छा, इट्स क्लियर, आई विल कंटिन्यू देन, ठीक है। हम्म। सो अभी जैसे ईपी में है ना, आई कांट ट्रेड इट ऑन अ मोबाइल। I need my laptop screen. I need my second screen. I need it in a particular tiled manner for me to execute fast. वो थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, इट्स लाइक तो अ बैट्समैन फाइंडिंग आउट कि भाई उसका बैट का वेट ऐसा 20 ग्राम ऊपर चला गया, सो हिल शेव ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अभी स्क्वाश आई प्ले में अनुराग मैं 125 ग्राम से अगर 140 ग्राम भी ले लेता हूँ रैकेट, ठीक है, माई स्विंग क्वालिटी कंप्लीटली चेंजेस। So what it happens, right? This is a very pure, stupid, rudimentary work which will come out of practice. People overemphasize this a lot. Do it for 2-3 quarters. I think it becomes very easy. Karthik, अनुराग जी, who आप we keep talking about on the group, right? He used to trade so हाँ, much आई आपका थिंक नेटवर्क का through. शायद इशू है। Hello. ईश्वरी जी को कुछ इश्यू आ रही है शायद। Okay. I think चिराग जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मुझे लगता है आपके ऑडियो में वो इंटरनेट का कुछ इशू है। हाँ, आपका स्क्रीन फ्रीज हो रहा था बीच बीच में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, शैल आई कंटिन्यू? अनुराग जी, आपका सबका यानी आई थिंक सबको सुनाई दे रहा है, शायद मेरे इंटरनेट में इशू है, तो प्लीज कंटिन्यू। Okay, okay. So what I was saying was a execution speed जो है ना, this is purely not the theoretical concept. Sit in front of a screen, get it done, do a few quarters, it will be very easy. ठीक है। जैसे कार्तिक, I was giving an example. He was a very positional. मतलब I used to tease him like a rule Nazi कि भाई यहीं पे ब्रेक होगा, उसी के बाद तू सोते सोते ऑर्डर डालेगा करके। Right now I think he takes about 20-30 trades in a day at times. It is only about practice. So one of the say early exercises that we ask the prop traders to do, right? जब हम लोग इस पे आते थे, नए नए आते थे, हम लोग उनको प्रोसीजर बोलते थे कि अल्फाबेट्स डालो ZXY करके एंड एट ए, ठीक है, एंड पुट रिवर्स अल्फाबेट्स एंड टाइप इट एंड देन वी यूज टू टाइम देम, ठीक है। जब पहले बार डालता था ना, आपको तो याद भी नहीं आएगा कि उल्टा अल्फाबेट्स क्या है करके, ठीक है। आपको ZYX के बाद मतलब एक एक तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट आता है, and by the time you are at somewhere in between M and you won't even remember what the next alphabet was. So the first thing people used to do in the first 10 times was just remember the alphabets. ठीक है, कि उल्टा आता कैसा है। उसके बाद टाइपिंग स्पीड आता था, उसके बाद उसके ऊपर एफिशिएंसी आता था। So only thing that it took was manual practice. Unfortunately, this is a craft and it gets solved very easily. I don't think I'm a very fast typist. I'm still a dinosaur in many of my startup rooms, but I'm still comfortable in most of the EP executions which are there. इनफैक्ट आई वुड से जो आप बता रहे हो ना कि टाइपिंग, स्टिल आई कैन सी दैट इन मैनी प्लेसेस दैट दिस इज द फर्स्ट टास्क इज बीइंग गिवन टू ऑल द न्यू कमर्स। हाँ, इट्स अ वेरी प्रोसीजरल टास्क, ठीक है। हम लोग मतलब एक्सपर्ट लेवल, बहुत कॉमन लेवल प्रॉब्लम्स को एक्सपर्ट लेवल बता देते हैं, इट्स नॉट। इनफैक्ट इफ यू वांट, पीपल कैन गो ऑन टू द ईपी वेबिनार दैट वी हैड आल्सो डन, उसमें वी हैड आल्सो डन सम लाइव ट्रेड सिमुलेशंस। वन ऑफ इट वाज ऑफ अ लास्ट डे जब आई थिंक वी हैड मोर देन 100+ रिजल्ट्स, ठीक है। वो 100+ रिजल्ट्स को कैसे तो टाइम करके मिनट बाय मिनट किया था, यू विल से इट वाज वेरी स्मूथ। Obviously, you will miss trades. You can't take all the trades all the time, but it is reasonable enough to execute it smoothly. इसको भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है ना। एक इजी एक्सरसाइज ये है कि फुल अकाउंट मत लीजिए, एक ऐसा अकाउंट लीजिए विच इज नॉट, जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट ना करे, राइट। जैसे 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, 10 लाख, कुछ भी ले लीजिए, राइट। एंड टेक अ लॉट ऑफ ईपी ट्रेड्स, जो मिल रहा है सब बाय करते जाइए। डोंट वरी माय अबाउट गॉड, वेदर यू मेक मनी और यू लूज मनी, राइट। ओके, जस्ट टेक, हम लोग कभी कभी ये ट्रेड टीम में भी करते हैं, जब कोई आता है और वो बहुत फेयरफुल होता है ना एग्जीक्यूशन, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि अगले 1 महीने में 100 ट्रेड लेना है, ठीक है। अकाउंट माय साइज गॉड, कम कर दो, स्टार्ट पंचिंग ऑर्डर्स एंड डू अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, राइट। अब इससे क्या होता है, व्हेन ही कीप्स ऑन टेकिंग ट्रेड्स, क्या होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन खुद अच्छा होने लगता है एग्जीक्यूशन, और जो फियर होता है ना कि पैसा लूज होगा, वो निकल जाता है। ओके, 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 पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, राइट। सो let's move to another question. Does sector theme strength play a role here? What I mean by that suppose a theme is working
in a particular EP season. So at the later part of the EP season, do you consciously try to trade in those theme or sectors which is working during that EP season, where the EP trades of that theme or sector is working, or you stay open and go by the same process what you do maintain? Yes, I do keep a bias. आपका आता है bias, obviously, ठीक है? Because subconsciously also you're tracking those stocks even before results. So yes, there's a bias, but will it trump? मतलब if I see a better one and I completely go all in on an EP, it may not necessarily always happen. बहुत बार क्या होता है ना, if it is already trending, right, it is already priced in by the time a result comes. तो यस वो Mhm. लॉजिकली तो ये सही लगता है कि जहाँ पे थीम है उधर ही रिजल्ट चलेगा, बट ये बहुत कम होता है टू एन एक्सटेंट. I इनफैक्ट will द add कॉन्ट्ररी हैपेंस. व्हाट मैनी. हम्म, हाँ चला. नहीं नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड, फिर In मैं fact, the add contrary, what happens is, अगर खासकर commoditized sectors है ना, like say a cement or a dairy or a sugar या something, ठीक है, जहां पे कुछ unexpected आ गया है in a leader, okay, so it may take say, अगर मैं ये ले लेता हूँ, डेयरी ले लेता हूँ, ठीक है, something like a Dodla Dairy, Dodla or the Hatsun or something does, you will start seeing that effect on the other sectors, other companies in that sector also on the same day. ठीक है. तो इफ आई एम सीइंग अ गुड रिजल्ट इन दौदला दारी, आई विल स्टार्ट लुकिंग एट पराग मिल्क, आई विल स्टार्ट लुकिंग एट हैटसन की वही फैक्टर्स कहीं पे उधर रेप्लिकेट तो नहीं हो रहा है. सेम थिंग्स विल हैपनिंग स्टार्ट हैपनिंग इन शुगर आल्सो. इनफैक्ट द कॉन्ट्ररी हैपेंस अ लॉट बेटर. ठीक है, वेयर यू एक्चुअली सी अ सेक्टोरल मूव हैपनिंग बिकॉज ऑफ एन अर्निंग्स. हाँ हाँ चलो. Okay, yes, that's true. मैं The thing इसमें एक पॉइंट ये was, ऐड करूंगा, मैं इसमें एक पॉइंट ये ऐड yes, करूंगा कि Chirag इफ ji. यू हैव अ रनिंग टीम, राइट, तो नेग्लेक्टेड नहीं Hmm. होगा ज्यादातर केसेस में, हम्म. राइट. हाँ, सो neglected एक नहीं बहुत हुआ. अच्छा कंसेप्ट जो है प्रदीप बॉन्डे का, वो है प्लास्टिक्स का. ही लुक फॉर Hmm. ही लुक फॉर मतलब थीम्स में वो क्या करते हैं कि वो दो तीन थीम पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. अब सीमेंट में जैसे सिम्प्रो है, ठीक है, उसमें ईपी आया नाउ. आप बोलेंगे कि मेरा जो पॉइंट है वो गलत है क्योंकि सिम्प्रो में ईपी आ गया, लेकिन पॉइंट क्या होता है, इफ यू गेट एन ईपी नेटवेव, इट इज अ फार बेटर देन हैविंग एन ईपी इन मतलब कोई सीमेंट कंपनी में, क्योंकि सीमेंट कंपनी में उसका जो भी इंक्रीज होगा ना, वो ज्यादातर फैक्ट्री कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो अर्निंग्स इंक्रीज होगा, कोई टेम्पररी रीजन होगा. लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह में आपके पास बेटर मूव बड़ा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली. Sustain देगा. हाँ, उस चीज की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये चीज का एक अंतर मैं मानता हूँ. दूसरा क्या होता है, एक बहुत अच्छा आइडिया ये है कि जैसे आपने मजडॉक का जब रन आया था अपना, ठीक Okay. है, मजडॉक जब अपना एग्जॉस्ट हो गया था और उसके बाद फिर जब वो दोबारा से चलना शुरू हुआ, आपका अप्रैल वगैरह के आसपास में, अप्रैल में मई, आई थिंक 5 जून को उसका रिजल्ट था, मई जून वाला जो रिजल्ट आपका होगा उस समय, मई मई वाला रिजल्ट होगा प्रॉब्लम. तो उस समय क्या था कि कोचिन की अर्निंग्स बहुत खराब आई थी और मजडॉक की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी. मजडॉक की अर्निंग्स कोचिन के बाद आई थी. सो इट वाज अ सेक्टर दैट वाज इन मोमेंटम. maybe due to some reasons things weren't played out in the prior quarter, या रन बहुत हो गया था तो करेक्ट होने लगा. बट एट अ लेटर स्टेज व्हेन द ईपी अगेन केम, तो वो सेक्टर वापस से रिवाइव हो. तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैड सीन. आई थिंक ईश्वरी जी का नेट का कुछ इशू आ गया. हम्म. Sorry, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. I think reconnect हुआ. कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, सो हाँ, विल टेक द नेक्स्ट वन ईश्वर जी. देयर आर मेनी, विल गो एज पर योर फ्लो. अगर कुछ मिस हो गया तो सेपरेटली आंसर कर देंगे. Question? हेलो. Nakul? Yes, Nakul. Hi. Okay. Guys, can you hear me? Yes, यस. hi, Nakul. Got it. Okay, great. So, Anurag, the question possibly you were looking for, which you wanted to answer, is could be this Sempro ka day two entry exit, or Hmm. there was another question which said like, what other factors should we check when there is significant EP before entering? I have another question. Just I thought I'll brush up on these if you wanted to answer any of these. ओके ठीक है, चलो सैम्पलो वाला ही ले लेते हैं, चार्ट पे ही ले लेते हैं. चला एक बार चार्ट शेयर कर ले लो कोई भी. ठीक है.
और सेम करो, या एक डे वन के बाद चाहिए तो पॉज कर देते हैं इसका। I'll tell you my real time thinking at that point, Nakul. Oh, great. ठीक है। Now this was a very clean EP. ठीक है, then it hit an upper circuit. Okay. Mhm. Now see the context of it. It was kind of on an uprise any before the result itself. ठीक है, it had moved what about roughly about 20-30% odd before the results. Correct. Yeah. Yeah. Abhi, what happens is when you have a very strong up move, right? Say, even though this may not be in a very strong up move, but हो क्या गया है, अपर सर्किट की वजह से बहुत इमीडिएट ओवर एक्सटेंशन आ जाएगा। Correct. That was my risk in this, and this often happens. So what happens is, what are the two alternatives you have? Either you wait for the pullback, what most of the traders actually end up doing. Okay. But if you have a size on it, you ideally don't want to मतलब do a lot in this, मतलब you don't want to wait for time ना, इतना बड़ा size लेके क्यों inefficient रहना। ठीक है। अभी ये केस में देखो कि now it is an upper circuit. Now what are the 2-3 scenarios that can happen over the day? ठीक है। वन इज, अगर ये गैप अप करके और ऊपर जाता है, करेक्ट, द ओवर एक्सटेंडेड इज गेटिंग इवन मोर एक्सटेंडेड। Yes. वन, ठीक है। सेकेंड सिनारियो क्या है, गैप अप होता है, ठीक है, फिर ब्रेक डाउन होने लगता है। Okay, that means what? The gap up is not sustaining. So most likely I'll end up with probably a negative red bar. How deep I don't know, but probably a red bar during the day. My normal thesis may be these two if it actually gaps up. ठीक है। Yes. सेकेंड सिचुएशन क्या है कि सपोज फ्लैट ओपन होता है, देन आई एक्चुअली डोंट हैव अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट, आई जस्ट हैव टू सी हाउ द फॉलो थ्रू इज ड्यूरिंग द डे। करेक्ट। यहां से अगर गैप डाउन होता है, दैट इज द मोस्ट बेरिश सिनेरियो आफ्टर एन अपर सर्किट। सो या तो नीचे जाएगा या नीचे जाके रिवर्स मारेगा। तो अगर नीचे जा रहा है, मोस्ट लाइकली आई मे गेट इन अ सेल पॉइंट, बट आई मे वांट टू बाई बैक। So what I actually do is many a times I buy it, I sell it off partially. Okay, this is still a magnitude trade for me. I'm not changing my objective in any way. But this is something which we call as the trading around a core position. You maintain a core position and then trade around it. ठीक है, so your trade core position may be say 50% of your position, 2/3 of your position, whatever it is. ठीक है। अभी चला एक काम करें, एक 5 मिनट पे या 1 मिनट पे कैन वी जस्ट बार बाय बार रिप्ले। Come in. Yeah, Nakul, you're there? ठीक है, Where are you? just do this with me। ठीक है, now see it has gapped up, it's given you a strong bar। Yes. ठीक है, this is the next day, we are playing it on a 1 minute यहाँ पे। Yeah. ठीक है, this has given you a strong bar, Yeah. extension है already। Yes. एक, एक मिनट, let's just चिराग set it एक सेकेंड। Hmm. ये दोनों 1 मिनट आ गया शायद। या अच्छा, गुड, हाँ। सो द राइट हैंड साइड इज 1 मिनट, द लेफ्ट हैंड साइड इज डेली, करेक्ट। Yep. ठीक है। हाँ, चिराग आगे लेता। ठीक है, नथिंग मच अभी तक। नाउ सी इट इज ब्रेकिंग डाउन। Hmm. ठीक Yes. है, नाउ यू हैव गॉटन काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन कि भाई फॉलो थ्रू तो नहीं आ रहा है तुम्हारे इनिशियल गैप अप का। ठीक है। Right. अभी नाउ माय बायस केम आउट कि भाई अगर ये ब्रेक डाउन होता है, काइंड ऑफ आई वाज एट दैट टाइम प्रेडिक्टिंग दैट इट विल गो डाउन। ओके, एंड आई मे एट टाइम्स वांट टू बाय दिस पोजीशन बैक। ठीक है। पर वहां पे एक फ्लॉ क्या आ जाता है ना नकुल, वाई वी ऑफन लूज अ पोजीशन इज इफ यू वुड वांट अ परफेक्ट एंट्री ऑन द बायबैक। ठीक है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि पूरा नीचे आएगा, तुम्हारा 10 DA में कैचअप होगा, फ्लैग बनना स्टार्ट होगा, तुमको टाइट बार मिलेगा, उसके बाद तुम एंट्री लेने जाओगे, what you have done is you have concentrated your entry timing to such a precise moment, correct, that if you miss that say 10 minute or a 30 minute window, you have lost out on your whole position। Yes. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट, सिंस इट्स अ मैग्नीट्यूड ट्रेड फॉर मी, इट्स अ पोजिशनल ट्रेड फॉर मी। ठीक है,
तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, सपोज यहाँ पे कहीं पे बेच दिया, यू कैन सी एन एविडेंट ब्रेकडाउन, राइट? Yes. ओके, एविडेंट ब्रेकडाउन है। सो नाउ थिंक ऑफ इट लाइक अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है, विच आई एम गोइंग टू ट्रेल वेरी फास्ट। आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई कोर पोजिशन, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे आई थिंक 837 टाइप्स आई थिंक वेयर माई सेल वॉज, एक मिनट। 832 or something, you remember, or 835. हाँ ऐसे ही कुछ, हाँ 837 का सेल था, ठीक है, 837.5 का सेल था ये वाले बाल पे, ठीक है। वेरी इजी ब्रेक डाउन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मतलब नो रॉकेट साइंस इन दिस, ठीक है। Yes. थोड़ा आगे जाना चाहिए। ओके, नाउ सी, नाउ दिस इज ब्रेकिंग डाउन। Yes. ओके, नाउ शॉर्ट्स अभी व्हेन आई एम डूइंग दिस, राइट, दिस इफ यू सी इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, दिस इज ओनली एक्सपेक्टेड राइट नाउ टू बी अ टेम्पररी पुल बैक। ओके, तो Yes. अभी मैं कर क्या रहा हूँ ना, द मोमेंट इट कम्स डाउन, ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ बिग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर माई बट, कि अगर बहुत नीचे गिर जाए, राइट, आई एम एबल टू एवरेज माई कॉस्ट बेटर, ठीक है। तो अभी ये जैसे ही नीचे आया, राइट, आई हैव गॉटन माई से बाई ऑर्डर बैक एट 836 837 टाइप्स, ठीक है। सो दैट इवन इफ इट कम्स अप आई एम ओके टू गेट चॉप्ड आउट, दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन फॉर मी, दिस इज जस्ट अ हेज पोजीशन फॉर मी टू एन एक्सटेंट, ठीक है। एक बार 5 मिनट पे आ जाना चाहिए, तो चला थोड़ा आगे जाता है। Anurag, one question. The moment you punched in the sell order at 835 or 837, the same moment did you place a buyback order at a higher level? Matlab, did you have stop loss for that? यस, उसका था, सो रफली अबाउट 3-4 रुपीज। Okay, okay, got it. इट वाज देयर, क्योंकि आई कैन नॉट रिस्क कि भाई इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा। Yes, सो okay. मैं उस टाइम पे भी क्या ले रहा हूँ ना, आई एम टेकिंग अ रिस्क, कि भाई ये 3-4 रुपए जाने का है, देयर इज नॉट नॉट नेवर गोइंग टू बी अ जीरो ट्रेड रिस्क इन दिस केस, ठीक है। मैं सिर्फ ये टाइम पे क्या कर रहा हूँ, आई एम थिंकिंग दैट माई रिस्क टू प्रॉफिट इज अ लॉट मोर देन माई रिस्क टू कैपिटल, ठीक Yes. है। अगर ये टाइम पे जैसे ऊपर गया ना नकुल, टेक से फ्रॉम माई एंट्री आई थिंक वाज अराउंड 740, ठीक है। तो अगर मैं 837 तक लेता हूं, इट इज रफली व्हाट अबाउट 12.5% अप, ठीक है। तो दैट इन रफली, अगर मैं 1.5% का स्टॉप लॉस था, तो कितना हो गया, रफली अबाउट 8 8.5 आवर, ओके। इफ इट कम्स बैक डाउन, माई प्रॉफिट रिस्क इज राइट नाउ अबाउट 6 to 7 आवर इजी। Yes. So as you go higher into profit, your risk to profit is always going to be much higher. तो अगर तुम स्टार्ट में बोले होते ना 737 पे, यू वुड नेवर हैव टेकन अ 7 or 8 hours ट्रेड रिस्क, बट यू आर राइट नाउ टेकिंग अ ट्रेड रिस्क ऑन प्रॉफिट, Yes. ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर दैट, Got it. Clear. ठीक है। अभी ये नीचे गया, थोड़ा आगे जाना चाहिए। फिर नथिंग, राइट, आई हैव नॉट येट प्रॉफिट बुक, आई कुड हैव, ठीक है, कुड हैव सेव्ड समथिंग, बट आई डिड नॉट उस समय फॉर सम रीजन, ठीक है। अभी तो थोड़ा आगे चलते जाना चाहिए। Now you see some small consolidations coming in. ठीक Yes. है, नाउ दिस इज काइंड ऑफ बेसिंग, ठीक है। आई वॉज वेरी रूडिमेंट्री यहाँ पे भाई, आई डिड नॉट वांट टू बी ऑन द स्क्रीन, माई वर्क आवर्स फॉर स्टार्टिंग, आई जस्ट पुट इन अ बाय ऑर्डर एट 835 एंड लेफ्ट, दैट्स इट, दैट इज 832 एंड लेफ्ट, दैट इज ऑल द ट्रेड वॉज अबाउट, Mm, mm. ठीक है। अगर ये नीचे जाता ना, वर्स्ट केस नकुल क्या होता, माई प्रोबेबिलिटी वॉज, सपोज यहाँ से नीचे जाता, सपोज 800 780 काइंड ऑफ क्लोज होता, I would have probably bought back the next morning itself to ease out my execution route. I'm not looking for the perfect entry. And that is the actual edge in this kind of a management where you're not optimizing for perfection. You're optimizing for R or working around a goal position. Yeah. Very clear. Very So insightful. this was one of the aha moment during a discussion with Anurag last year. तो आई वॉज हैविंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ऊपर जाने पे जब बेच लेता था ना, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बाई इट अगेन, राइट। सो ऑफन क्या होता था, ट्रेड एक और टाइट बार आएगा, थोड़ा और परफेक्ट होगा, फिर आपको एंट्री मिल भी गई, उस चक्कर में स्टॉक चला जाता था, कभी परफेक्ट हो भी गया, देन यू गेट स्टॉप आउट। सो दिस वाज वन ऑफ द आहा मोमेंट दैट यू कैन सेल एंड बाय इन परफेक्ट। तो Yes. आई थिंक कि वहाँ भी एक ऑप्टिमाइजेशन होता है जहाँ परफेक्शन पे नहीं कर रहा है, बट इट इज मोर अबाउट गेटिंग द थिंग्स डन, दैट इज व्हाट मैटर्स एट दैट पॉइंट। Makes sense. Makes sense. Okay. ये नकुल बहुत बार होगा ईपीस में है ना, where it is going to get temporarily extended. That is also a character of an EP. ठीक है, बट उसमें मेरे को ये डर था कि ये नीचे जाएगा आफ्टर द बेसिंग स्टार्टेड हैपनिंग। आई डिड नॉट ट्रैक द बेसिंग फ्रॉम 10 10 10 11 ऑनवर्ड्स, आई जस्ट पुट एन ऑर्डर एंड आई वाज ऑफ स्क्रीन।
So someone had also asked, how do you do it with a working professional? I'm a working professional, and this is the one of the best setups you can take. So we call it as ROTI, return on time invested करके, which is a lot more important than ROI. आपका executions in EP क्या होता है ना? You can do it over the day. There are many opportunities, but a lot of EP, because of its character, gets triggered in the first 5 to 15 minutes. So if you are able to do that, you will anyway be 80% or nearly as effective as a full-time trader. Yeah, makes sense. Okay, great. Yeah. Thanks, Anurag and Chirag, for this. I have Yeah. a separate question, which is regarding how do you trade manage in terms of EP? Chirag had answered this over tweet, I remember. When you buy EP trade, it moves in your favor typically at 1 hour. Let's say 1.5% risk है. When it moves 1 hour in your favor, you move the SL to cost or cost plus. Does this happen? Like, do you do this mechanically in all cases, or is there some sort of element where you can take a judgmental call? One, and secondly, do you do this also for non-EP trade? Let's say you have traditional VCP kind of a play, positional play you are doing. It is not necessarily a gap up EP. Do you also do trade management similar way? Both Chirag and Anurag, for both of you, this question is. Okay. Chirag, तुम कर लेना. अच्छा, Yes, also yes. people are asking, we are at 12:40. Ishwari ji, till when do we continue the session? If not, we'll have additional questions later also. I'm just asking. तो उस depth में जाए. I think this चिराग जी, कितना समय तक के लिए हमने ये जूम को रखा? I नहीं, think वो 115. जूम का तो कोई इश्यू नहीं था. बाकी क्या है कि हम लोगों ने 1 का डिसाइड किया था. वी कैन डिसाइड बेस्ड ऑन हाउ सिचुएशंस आर गोइंग, और कुछ नहीं. तो आप बताइए, आप और अनुराग बताइए कि एक कब काम तक कर हम सकते हैं. Let's take it to say about 110, 115. There are, I think, so many questions. I don't think we'll be able to cover in the next 2 या also in depth. हाँ हाँ. What we can do is we can take them separately. We'll answer them in the group or messages or whatever. Or we can keep a follow-up session also. I think both of it is fine for me. यस यस, ठीक है. हाँ, ओके. हाँ नकुल, आपके क्वेश्चंस ये थे कि स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कब करते हैं, राइट? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क. तो जनरली क्या होता है कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद साइज, यू डोंट वांट टू गिव अ लॉट ऑफ लीवे. ये जनरली एक क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट यू वांट टू लेट गो. डू यू वांट टू लेट गो ऑफ अपॉर्चुनिटी, और डू यू वांट टू, देखिए क्या होता है, कुछ भी आप ऑप्टिमाइज करें तो कुछ ना कुछ दूसरी चीज उसके लिए हिट होगी, राइट? नाउ आइडेंटिफाई, ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द डेविल यू वांट टू बी विद. आपको डेविल तो मिलना ही है, कौन सा डेविल आपको चाहिए वो आप चुनिए, ठीक है? अब पॉइंट क्या है, यदि आप अपॉर्चुनिटी बचाने जाएंगे और आप बोलेंगे मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन नहीं करूंगा, तो स्टॉप आउट होने का रिस्क है, ठीक है, वहां पे. लेकिन आपको ये बेनिफिट है. तो दो चीजें हम लोग करते हैं. एक क्या करते हैं, डेटा ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं टू डिसाइड अ लेवल, राइट? उस पे मैं आऊंगा. लेकिन जनरली मैं ये मानता हूँ कि 1 आवर पे ट्रेल करके यदि मैं स्टॉप आउट हो गया तो मुझे दूसरा ट्रेड लगातार मिलता ही रहता है. आई एम ऑलवेज फुली इन्वेस्टेड. तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एक ट्रेड चला गया तो चला गया, आई कांट डू मच अबाउट दैट. यदि मैं, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डेटा का एक यूज बताता हूँ, ठीक है? ये हम लोग बहुत करते हैं ट्रेडिंग के अंदर. तो एक काम क्या कीजिए कि एक एक्सट्रीम पकड़ लीजिए. आप वाइडेस्ट स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कब करेंगे? 3 आवर पे करेंगे? Yeah, for sure. उससे वाइड कर सकते हैं? एकदम नहीं. वाइल्ड सोच के देखिए, नहीं Yeah, करेंगे. max 3 hour. उसके बाद तो no way. लीस्ट क्या कर सकते हैं, सबसे लीस्ट क्या कर सकते हैं? 1 आवर, उससे कम नहीं करेंगे, Yeah, राइट? minimum. रेंज तय है. तो अब एक का कंसेप्ट होता है चेस में विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है? अभी अब जब आप सोचते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. लेकिन अब देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे. 3 आवर के बियॉन्ड हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, अपने को सूचना नहीं है. 1 आवर के नीचे अपने को सूचना नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है? अब पकड़िए एक लेवल. 1 आवर पे अपने अगले 20 ट्रेड्स 50 ट्रेड्स ट्रेल कर लीजिए ब्रेक इवन पे, या पास्ट के ट्रेड का डेटा निकाल लीजिए, ठीक है? दोनों तरह से काम करेगा. अब उसमें आपने जो डेटा निकाला उसमें देखिए कि 1 आवर करते और आप स्टॉप आउट होते हैं 1 आवर पे, ऐसे कितने ट्रेड्स थे जो आपने ब्रेक इवन पे काटे, बिकॉज यू ट्रेड योर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन एंड इट केम बैक टू योर कॉस्ट, ठीक है? सारा डेटा निकाल लीजिए. देखिए कि यदि 2 आवर करते, 1.5 पे करते तो कितने ट्रेड्स बचते, 2 आवर पे करते कितने ट्रेड्स बचते, 2.5 पे करते कितने ट्रेड्स बचते, और 3 आवर करते कितने ट्रेड्स बचते, राइट? यदि आपके 90% ट्रेड्स 1 आवर पे करने से भी उतने ही सक्सेसफुल हैं, और सिर्फ कुछ ही ट्रेड्स हैं जो 2 आवर पे करते तो बचते, तो मतलब ये है कि 1 आवर पे करने से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि यू आर प्रोटेक्टिंग योर रिस्क वेरी फास्ट,
राइट। तो जहां पे कई जगह चीजें क्या होती है, जैसे 1.5% स्टॉप लॉस, ये मैंने स्टॉप लॉस चार्ट में लगाना ही छोड़ दिया। मेरा कैलकुलेशन ऐसा है, 6 रुपए है तो 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, 7 रुपए का, 700 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। 600 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। एग्जीक्यूशन की स्पीड कितना जल्दी आप ला सकते हैं, 10 रुपए स्टॉप लॉस लगाए, बेनिफिट क्या है। ठीक है, आपको 10,000 रुपए का रिस्क लेना है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, पता चला 1,000 शेयर बाय करना है। ईजी है, एकदम ईजी है। तो स्पीड बहुत आ जाती है एग्जीक्यूट करने में आपके पास में, इस तरह के कैलकुलेशन से। ठीक है, 3 रुपए का है, 300 रुपए का स्टॉक है, 4.5 रुपए डीपी स्टॉप लॉस लगा दो, ईजी है एकदम। राइट। अब यहाँ क्या, यहाँ आप डेटा एनालिसिस कर लीजिए कि 1.5% आप ले रहे हैं, 1.5 ले रहे हैं, तो आपके कितने स्टॉप सेट हो रहे हैं। ठीक है, क्या आप इंप्रूव कर सकते थे उसको। आपको यदि पता चला कि 90% ऑफ ट्रेड इज स्टिल कमिंग देयर, देन यू आर फाइन टू डू दैट। अब पॉइंट क्या होता है ना, कि द मोमेंट यू डिलिंक्ड योर स्टॉप लॉस फ्रॉम अ चार्ट स्ट्रक्चर, कि आप ये स्विंग लो के नीचे जाएंगे, डे लो के नीचे जाएंगे, राइट, अ लॉट ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटीज केम इनटू फोर्स, राइट। ज्यादातर लोग कोई भी जो टीच करे ना, कोई भी डे टू एंट्री क्यों नहीं सोच पाए, उसका एक रीजन ये है कि वो हमेशा स्टॉप लॉस को किसी एंकर पॉइंट चार्ट पे लगाना चाहते हैं। राइट। अब जैसे ही आपने एक जबरदस्ती का थोपा हुआ कंसेप्ट एलिमिनेट कर दिया ना, यू विल सी दैट आपका क्रिएटिविटी एकदम, बहुत सारे आइडियाज आपके पास आ गए। इन सेम वे कई जगह डेटा यूज करना चाहिए। ब्रेक इवन पे कब ट्रिल करना है, इसमें डेटा यूज करना इज अ वेरी यूजफुल थिंग, बिकॉज जहां भी आपको मेंटल बैरियर आ रहा है ना, हमेशा क्वांटिफाई कीजिए, फियर क्वांटिफाई कीजिए। मेंटल बैरियर आ रहा है, उसको क्वांटिफाई कीजिए। 1 आवर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत जल्दी है, तो मुझे ये बताइए कि कितना जल्दी है, उसको डेटा पे मुझे दिखाइए कि कितना जल्दी है। दैट इज द की पॉइंट। द मोमेंट यू विल फिगर आउट द डेटा, यू विल गेट द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, राइट। Good. अनदर थिंग जो है वो ये है कि जहां पे हम लोग इस चीज को करेंगे, सेकेंड पॉइंट ये है जहां पर कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या कहीं पे हम लोग उसको जजमेंट बेस्ड कर सकते हैं, राइट, क्या कहीं पे स्विच करते हैं। कभी कभी मैं थोड़ा फास्टर भी स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर लेता हूँ, जब मुझे पैसा कमाने का मन नहीं करता है। तो जनरली डीले में बहुत कम करता हूँ, तो ये मेरा एडजस्टमेंट था इस साइड में। ठीक है, मैंने खुद को इस डेविल के साथ कंफर्टेबल कर लिया है कि आई वांट साइज, राइट, आई वांट स्पीड, आई वांट साइज, एंड आई विल ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन क्वाइट फास्टर। यदि उसके लिए मेरा ट्रेड जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आई एम वेरी प्रिसाइज इन बाइंग, आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट। ठीक है ना। सही। In fact, I'll take a more binary. Nakul, if you see data, right, 80% of the earnings gap ups are going to fail. Okay, that is, matlab, at least when we found out, I think this data has not changed a lot in the last 3 years, but 80% of the gap ups fail. Okay, so I am inherently a lot more risk conservative as a person. Okay, so if I want to increase my risk appetite in trading, right, so I need to have some execution matlab, techniques where it is allowing me to take more risk. Okay. So let me take this. I had written something about a win rate hack. Okay. I don't like a 30%, 40% win rate strategy. It creates a negative loop in my mind. I would rather have a 70, 80% kind of a win strategy. Okay. And what do I need to do for that? I need to do two things. One, I need to keep a very initial tight stop loss. Second, I need to raise my stop loss as fast as possible to cost plus. Okay. If I'm able to do these two things, I should be able to hack my win rate. Yes. Okay. The con of it is I may be shaken out a lot more. Hmm. Okay. So your question कि ये ईपी में ही ऐसा होता है क्या, इसमें नहीं होता है। ईपी इज अ बेसिक सेटअप विच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ फोमो। ठीक है, तो आपका जो फीडबैक आना है ना, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इमीडिएट। By 9:45:10, more or less you know whether your trade has become risk free or whether you have gotten stopped out. It is so fast. Correct. So अगर my management technique, right, of taking the stop loss up very fast works the best in EP. It may work on VCPs, but it works the much better of a concept on EPs. ठीक है, so a -1 hour trade, correct, is a worst case possible outcome for me. A break even trade is also many a times a win, because अगर वो break even हो रहा है ना, the proportion of it shaking me out and then going up has been lower. ओके, मैं एक दो केसेस लेता हूँ। चलो एक दो चार्ट्स ले सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस भी थे। वी कैन टेक ऑन द मैनेजमेंट आल्सो। यस। जब तक आप चार्ट देखते हैं, अनुराग जी, एक चीज आपसे पूछनी है मुझे। या ये आप जब
एपी ट्रेड लेते हैं क्या उसी समय स्टॉप लॉस डाल देते हैं या बाद में करते हैं? हाँ ठीक है, चलो वो भी ले लेता हूँ। कौन सा, चल कल का ही ले लेते हैं, थर्मैक्स ही ले लेते हैं, चलो। लेट्स ठीक है। टेक अ गुड केस सिनेरियो एंड द बैड केस सिनेरियो। ओके लेट्स। When I say immediate, by punching the buy order, उसी समय स्टॉप लॉस डालते हैं या बाद में? Yeah, I'll take it. I'll take it. I'll take it with the execution. Minute by minute Okay. chart. Okay, I exactly probably run through my thought process also. ठीक है, अच्छा ये भी एक किसी का क्वेश्चन था कि भाई पहले का पैटर्न देखते हैं क्या। अभी यहाँ पे तो एकदम टिपिकल फ्लैग दिख रहा है, राइट। ओके, वन क्वेश्चन, आर द पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर बिफोर रिजल्ट्स एंड द पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर आफ्टर रिजल्ट्स, आर दे, इवन इफ दे आर द सेम, आर दे गोइंग टू पुट विद द सेम माइंडसेट? No, right? There's a new information which has come. There's a new urgency which has come. So everything right now, ये जो flag आया है ना, it has now become irrelevant. Yes, it looks good. It may probably think कि भाई base breakout हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, all of it. But every decision making point of what people are taken here is probably has come out with a new confirmation or a newness to it. So the character of the buying which is happening today and the character of buying which was happening in the flag is very different. Okay, so that this is not a pattern based setup. This is an actually money making setup. ठीक है, चलो आगे जाते हैं। चलो लेट्स प्ले इट से ऑन 1 मिनट। I'll also tell you how slow it is. हाँ, now see, नकुल ये देखो, ये 1 मिनट पे, राइट। ठीक है, now this is a negative bar kind of. It has gapped up and it has slightly given negative. ठीक है, this is your best possible scenario to have. I'll tell you why. गैप अप हुआ है, ठीक है। और अभी अगर मैं 1 मिनट पे लेता हूं ना, ये कितना था, 4400 के आसपास, करेक्ट। नाउ व्हाट डज द बायर हैव टू डू इन द सेकेंड मिनट? ओके, ही हैज टू टेक आउट द 1 मिनट एंड ही हैज टू पुट ऑर्डर्स विच विल नाउ इंक्रीज द प्राइस बाय से व्हाट, रफली अबाउट 100 रुपीज मोर। सो गैप अप हुआ है, विच इज माई इनिशियल वैलिडेशन ऑफ डिमांड। Now, for the red bar now to be taken out, there has to be a resumption of demand, what initially बहुत सारे लोग post कर रहे थे. If it happens at the first minute in itself, then do I even need to wait for the 5 minute ORB? I don't need to, right? I already got my confirmation. Correct? ये ईश्वरी जी you can get in on 30 seconds also if you want. Time frame is immaterial, no, beyond the point. ठीक है? Now यहाँ पे अभी 4400 के आसपास था. So immediately what I put it was roughly एक 4380770 के आसपास bid डाल दिया था. करेक्ट, इट टेक्स आउट एंड इट गोस। ठीक है, चिराग आगे जाते हैं, लेट्स प्ले मिनट टाइम। So you put the bid in advance. यस, सो अगर आप 916 को या 917 को एंट्री डालने जा रहे हो, राइट, यू एक्सपेक्ट इट विल टेक यू से अबाउट 15 to 30 seconds to enter. Mhm. Okay, so take in that buffer time. If you're putting at 916.15, you can't start putting at 916.110. You will miss. आप जब तक टाइप करने जाओगे तब तक भाग जाएगा। Mhm. Correct. So what this order actually helps, पता है? This has now given you a minute or two to easily put your orders at leisure. Okay. And सबसे while you टफ वाले put, एंट्रीज क्या होते हैं पता है? अगर इमीडिएटली ऐसा 5-6 मिनट कंटिन्यूअसली बैक टू बैक ग्रीन बाल्स आते हैं ना, दोज आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू टेक. true, correct, absolutely. I But miss a lot of those also. yeah, while you put the order in advance, do you put the stop loss also No, here? no, it's only after fill because the moment you put in your stop loss also आपका डबल मार्जिन यूटिलाइज हो जाएगा ब्रोकर के हिसाब से. You can't put in a sell order till you have an valid buy order on it. ये चीज जीरोधा में डिफरेंट होती है। अच्छा, अलग अलग है क्या? हाँ, जीरोधा में आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां आप नीचे यदि फ्लैट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं ना 1%, 1.5%, जस्ट पुट द परसेंटेज एंड यू कैन पंच द ऑर्डर। वो तब तक ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा जब तक कि आपको फिल नहीं If मिलेगा। this is the best, then great. I don't have it in ICICI, then good. तो अगर वैसा है, then put it a flat, say my stop loss is whichever the least or maximum 1.5 to 2%. If No, it is even that way, put, I would direct 1.5 to 2. Now you will find yeah, your stop loss. yeah. Okay. You And there can were put also it. some questions LOD stop loss के, I'll come to that also. Okay, एक एक Okay. चला आगे लेना. Now you got triggered, Nakul. ठीक है, Yes. यहाँ पे stop loss है. Okay. अभी if you see every time whenever there's an EP, right, your first 1 minute bar is always going to be a wide range bar. ठीक है, the moment you start taking an LOD of a stop loss, you are now going to go easily 4-5-6% up. Will completely destroy the math. ठीक है, अभी मैं यहां से उल्टा पकड़ता हूं. If the thesis of FOMO in an EP is valid, right,
ठीक है. Do I really need to wait for the whole LOD to be taken out to actually identify or confirm a squat? No. आई डोंट, राइट. No. तो आइडियली मेरे को क्या देखना है, यहां से सपोज एक पुल बैक आता भी है. ओके. इट में इफ इट इज अ डीप पुल बैक, इट शुड नॉट बी एज डीप एज एलओडी. ठीक है. तो अगर एक से सिंपलिस्टिक आइडियल बाई पॉइंट रखना, एंकर पॉइंट रखना भी है, लेट मी टेक द ब्रेकआउट बार लो फॉर एग्जांपल. ठीक है. वैलिड एंकर पॉइंट टू कीप अ Yes. स्टॉप लॉस. Yes. So even if I kept a 1.52% stop loss, my breakout bar low is what? Roughly about 30 odd rupees, 40 odd Yes. rupees. ठीक है. Yes. Which would be roughly what? About 0.8 to 1% of my stop loss. Yes. ठीक है. So even if I've taken a 1.5-2% stop loss, I don't need to wait for the full 1 hour to actually stop me out. Hmm. One. ठीक है. Second, LOD अगर रख दोगे, your math completely goes for the toss. If you see, most of your best EPs are never going to come down much below your cost anyway. So जो MAE वाला कॉन्सेप्ट है ना, your winners immediately वाला, वो Dan Zanger क्या था वो, क्या winning horses never come back to the gate वाला. Those are the most applicable to an EP, because if it is going to go up, it is going to go up immediately. Yes. Yes. Correct. थोड़ा आगे जाते हैं, चलो let's go. ठीक है. Now see, this is a pullback. Now if this fails, the stop out chance is very high. Yes. ठीक है. चलो. Now this breaks out. ये इंट्राडे फ्लैग है, बहुत अच्छा. हाँ, ये यही पिरामिड था जो मिस हो गया था मेरे से. ठीक और है. जो Now लोग see, 5 मिनट बाय करते हैं, दे विल बाय दिस. या ठीक है. नाउ दिस वर्कड, राइट. ठीक है. आपको 1 मिनट भी था, 5. अभी यहां से स्क्वाट हुआ. ओके. नकुल, दिस इज अ वेरी बैड स्क्वाट देन, इफ एट ऑल इट हैपेंस. Yes. ठीक है. तो अगर मैं ब्रेकआउट बार भी ले लो, दैट इज अ गुड एनफ लेवल टू कीप. इफ यू आर इवन मोर कंजर्वेटिव लाइक हाउ आई नॉर्मली एम, आई विल कीप इट एट कॉस्ट Hmm. 1. ठीक है. नाउ इफ यू सी, ये वाला जो ब्रेकआउट बार आया ना 925 को. Yes. Okay, why am I strengthening it here a lot more? This breakout bar is even stronger, actually, if you see, than the gap up. Okay, or the bid जहां पे मेरा trigger हुआ था. This buyer is actually putting in more money at a higher price. Yes. Correct. ठीक है. अभी तक देखो, in the last 10 minutes where we looked at, right? We did not look at volume, we did not look at R1. ठीक है. None of it actually affected our decision making in any case. Yes. ठीक है. अभी यहां से ऊपर चला गया और स्क्वाट हो गया ना, दैट मीन्स व्हाट, कि इनिशियल जितना भी बाइंग मोमेंटम था वो वीकेंड होने लगा. Yes. ठीक है. दैट इन इटसेल्फ इनवैलिडेट्स द होल ईपी थियरी. Yes. ठीक है. दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो वेयर योर एमए इज 0. Hmm. ठीक है. लेट्स टेक इन अनदर सिनेरियो वेयर यू विल टेक इन अ फुल -1 आवर. कौन सा था एक और, चिराग वो लेना ना, नाम इंडिया ले लेना ना फॉर एग्जांपल, निपॉन लाइफ वाला. Let's take it on the 28th of April. सेम उसमें भी अगर इंट्राडे प्ले कर देता है. यस. हाँ, या सी दिस. ठीक है. टिपिकल नेगेटिव बार नकुल. ठीक है. Yes. ये इवन दो इट लुक्स ग्रीन, इट इज It's नेगेटिव. negative. Yeah. ठीक है. सेम काइंड ऑफ 1 मिनट डाल दिया यहाँ पे. Hmm. ठीक है. आई गो इन. ठीक है. गेट्स ट्रिगर्ड. Yes. ठीक है. यहाँ पे आ गया. अभी यहाँ पे जैसे मैं स्टॉप लॉस सकता हूँ, सपोज पहले रख दिया थोड़ा 1022 1.5%, यहाँ पे फ्लैट डाल दिया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. 15 रुपीज और थोड़ा आगे जाना चाहिए. इमीडिएटली स्क्वाट्स Yes. डन. ठीक है. आई कुड, अभी ये जब नीचे स्क्वाट होके जाएगा, डिड आई रियली गेट अ चांस टू प्रोटेक्ट माई बट एनीवेयर? No. चांस ही नहीं था ना. तो होगा क्या पता है, दिस इज योर वर्स्ट केस सिनेरियो वेयर इट विल इमीडिएटली स्टार्ट स्क्वाटिंग एंड टेक आउट योर फुल स्टॉप लॉस. These should be only your -1 hour scenarios. नहीं तो 80% of the cases, right? You will have some or the other chance जहाँ पे आपका initial burst इतना आ गया है कि you have gotten a chance to raise your stop loss and -1 hour नहीं जाएगा, you are taking a partial loss. Yes. ठीक है. इफ यू गो ऑन माई प्रोफाइल, वो एक विन रेट हैक वाला जो था, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैड एक्चुअली कंपाइल्ड माई होल ईपी ट्रेड्स एंड सीन. So if you see where my a lot of edge also lies, no, is in break-even trades. So if I split my 100 EP trades, right, say about
30 to 40 will be loss making trades. Okay. And out of those 30 to 40, I think hardly about 15 or 10 would be like -1 hour. Most of the trades would be less than 0.5. Yep. Okay. Uh, a lot of trades, say about 40 to 50% of the trades will be break-even trades or close to break-even trades. Okay. That 10 to 15%, which really go big, will end up having a double-digit impact. तो वो डबल डिजिट इम्पैक्ट है ना, हर सीजन में क्या हो गया, अगर 3 या 4 या 2-4 भी मिल गया ना, यू आर अप बाय अबाउट 20% प्लस एवरी क्वार्टर. दैट इज व्हाट आई एंड अप टारगेटिंग. So the resilience in this game is you keep on playing that, say, 30-40 trades of EPs that you get every year. You'll end up with anywhere between 3 to 6 trades at the end of the season, which will end up making your year. Yes. Yeah. Anurag, one question on this one. See, the third bar you got entry. It is very strong, big bar, wide bar. Would you not move your SL similar to what we discussed कर in the सकता था, हाइपोथेटिकली यस, बट आई डिड नॉट. उस समय दूसरे स्टॉक्स देख रहा था, मेरा ध्यान नहीं Okay. गया, तो आई टुक अ फुल -1 hour. Okay. But otherwise, हाइपोथेटिकली यस, हाइंडसाइट पे होता ही, बट आई टुक अ माइनस फुल 1 hour, सो आई टुक दिस एग्जाम. ये क्वेश्चन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये नीचे आ गया ना, यदि वो थर्ड बार के बाद यहाँ हाँ से वो हाँ ऊपर चला जाता तो हाँ आप ये पूछते कि नीचे आया तो इतना जल्दी स्टॉप हाँ. कॉस्ट पे करने का कारण क्या था? No, this is real-time time limit. That's why I asked. So better to do one approach only. That how we हम्म looked at previous example. Ki we move it to the breakout bar low, little below that maybe just to give. If breakout माई bar is डिसीजन very. था वेरी इम्परफेक्ट नकुल, वो लगता है, बट दे आर वेरी रियल टाइम, वेरी इम्परफेक्ट. एंड इट, बट आई डोंट वांट टू बी परफेक्ट बियॉन्ड द पॉइंट कि भाई वो अननेसेसरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाए. I want to keep my execution or clarity of mind as the priority rather than become an analyst. Hmm, understood. Okay, very clear on this. Thank you very much, both of you. Very useful. This is now makes helps make peace with selecting the devil. ठीक है. आई थिंक कि 115 को हम लोग एक हार्ड स्टॉप रखते हैं बिकॉज आई थिंक कि थोड़ा वर्क भी है आगे, तो फिर वी विल कनेक्ट विथ वट एवर अदर क्वेश्चंस वी विल गेट. Yeah. राइट, यदि कोई एक क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दैट. नो प्रॉब्लम. So we are around 1-1. So we can take one more question, I suppose. या वी कैन टेक, यदि किसी का कोई चैट में से क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दैट. जो डॉक्यूमेंट है वी कैन टेक दैट लेटर एज वेल यदि वैसा. ठीक है. तो there are number कोई of तानला पे क्वेश्चन है आई थिंक. Okay, but what thinking you entered Tanla first minute high after first huge green bar? Oh, ओके. थोड़ा चार्ट पे देखना पड़ेगा. वांट टू टेक तानला तो कर लो, क्योंकि वो भी मैं एक्चुअली स्टॉप आउट हो गया था, मैं ब्रेक इवन पे ही निकला था, सेकंड हाफ वो भागा था. अच्छा, आ, लेना है तानला. हाँ ठीक है, ले लेते, लेट्स टेक दैट. यस, तानला आई थिंक हो गया ये हफ्ते वाला देना. दिन. हाँ हाँ, यही वाले दिन पे मैं भी स्टॉप आउट. एक बार ले लेना 1 मिनट पे चलो. आई थिंक ये उस दिन श्रेष्ठ एक ही यही स्टॉक था विच वाज आल्सो इन ZR. आई डोंट थिंक देयर वर मेनी स्टॉक्स ऑन दिस डे ऑन ZR आल्सो. एंड द डिलेमा स्टार्ट्स की फर्स्ट मिनट इज स्ट्रांग है तो बाय कहाँ करें? या सो यस, अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था ना श्रेष्ठ, आई टेल यू, आई रिमेम्बर दिस नाउ. ये सेकेंड मिनट जब हुआ था ना, व्हेन आई एम लुकिंग फॉर एन एंट्री, यू विल स्टिल काइंड ऑफ बी रूडिमेंट्री इन दिस केस वेर यू आर लुकिंग फॉर द टाइट बार और द नेगेटिव बार. ठीक है. अभी ये जो सेकेंड मिनट बाद आपको एक्चुअली दिख रहा है ना, ये मैंने जब एक 10-15 सेकेंड में दिखा था, दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द एक या दो ही स्टॉक था, और शायद ये वन ऑफ द प्राइमरी स्टॉक्स था ऑन ZR. 9:15 पे आई हैड एक्चुअली सीन दिस एज अ रेड बार इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स. इसमें एक्चुअली अगर 15 सेकेंड में देखोगे तो शायद तुमको डिफरेंट पैटर्न दिखेगा. ठीक है. तो ये सेकेंड मिनट बाद जो ये नीचे से जाके ऊपर गया ना, एक्चुअली आई सीन इट एज अ रेड बार, और उसके ऊपर मैंने एंट्री डाला था. दिस looks a lot better in the hindsight and shows me as an expert. It was not. It was a normal common entry where I had seen a red bar and put an entry above it. वैसा था श्रेष्ठ. So अगर ये जैसे ईश्वरी बोल रहे थे ना, put it on a lower time frame, probably you will see it better. But it was a normal flag kind of an entry only, which I had taken. हाँ चिराग, एक आरवॉल के ऊपर क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. एज यू आरवॉल सेड. अगर नहीं देखोगे तो क्या देखोगे लाइफ में?
व्हाट वाज द राइट अप्रोच एंड चेक पॉइंट? मेनली क्या होता है, दो तीन चीजें होती है। फर्स्ट आपने कॉन्टेक्स्ट पे चुन लिया, और एक चीज क्या होती है ना कि जस्ट एज राइट नाउ अनुराग सेड कि वो रेड बार जो होता है, तो रेड बार एक्चुअली कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वो सिर्फ इतना रखता है कि यू गेट एन एंकर पॉइंट टू मेजर द डिमांड की डिमांड आ रही है, और कुछ नहीं होता है। तो ज्यादातर ओपन का एक्शन देख लेते हैं कि ओपन के एक्शन में कहाँ अपने को ट्रेड मिल सकता है। इट इज प्योर प्राइस, कोई भी और डेटा फैक्टर कुछ नहीं देखना है, प्राइस पे देखते हैं। और ये देखते हैं कि कहाँ पे वी विल गेट अ सेफर एंट्री। सेफर नॉट इन टर्म्स ऑफ मतलब कि कोई भी तरह की कंफर्मेशन से सेफर, जैसे आपको एक एंकर पॉइंट मिल जाए जहां यू कैन पंच द ऑर्डर, दैट इज ऑल दैट यू सी। और कुछ नहीं देखते वहां पे। If you have a bias, you have momentum in your favor, you just look for something to punch order, nothing else. From 915 to 918. अच्छा, बहुत विवेक ज्यादा का जितने कंफर्मेशन पॉइंट्स हम लोग ढूंढेंगे ना, उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी। अच्छा, जस्ट एक लास्ट ले लेते हैं। आई थिंक चिराग, विवेक का एक था। हम्म विवेक, यू वांना अनम्यूट, यू वांना आस्क? काफी लंबा है इसके लिए, इफ यू आर देयर। Okay, I'll read it out then. How to manage positions effectively when one is already max deployed in the middle of an EP season and even better earnings start coming. What questions to ask yourself before we trim or exit running positions to accommodate for better opportunities? Can we be mechanical about this in any way? Or is it going to be discretionary always? ईश्वरी जी, आपके दो लड्डू विवेक को भी दे देना हाथ में जो है। Yeah, I think he also wants to eat the two and have it one in the mouth also. Vivek, you can't. So there have been, and I hope you have this problem so that we also have this problem. आज जैसे I am already deployed, right? I don't know if you were there at that time. I trimmed off a bit of the positions yesterday so that next week से जो positions आएंगे, I'll have a bit of margin left for it. But yeah, this will always kind of be to an extent partial rule, partial discretionary. If at all there was a way to perfect it, please tell me. But no way can you get all the parts completely correct. There is a opposite of what we are talking. Say for example, एक नया ईपी ट्रेडर है और उसके लॉस पे लॉस लगे जा रहे हैं, लेकिन उसने अभी एक ट्रेड लिया, उसमें अच्छा प्रॉफिट बन गया, और प्रॉफिट इतना बना कि उसके पुराने लॉसेस तक तो कवर हो गए। अभी वो जाके रुक गया। अब उसको बंदे के मन में डाउट बहुत आएगा कि भैया इसको काट दे, कम से कम मेरा पुराना प्रॉफिट तो होगा, क्या पता ये गिर जाए, या फिर इसको रन रहने दे। वॉट यू विल बी योर एडवाइस? Okay, again, your previous question, जैसे ही है ईश्वरी जी, are you playing the trade or are you playing your P&L? In the whole question, you never mentioned about the trade. You mentioned about the P&L effect of the trade. यस, पीएनएल। Correct, no? So then what are you trading? Are you trading your well-being or are you trading the trade in front of you? वेल बीइंग। So then choose. If your well-being at that point, if you think it is going to affect your overall decision making overall, many it is a practical way. So अभी जैसे someone पूछा ना, I trimmed off Bandhan yesterday. I may be very well proven an idiot on Monday morning if it goes up because the structure is not broken. It looks like a good enough flag, and many of the people may actually want to pyramid there. I took in a लेट call, भाई मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, let me prioritize it. I may be proven. I get your point. Let me rephrase it that way. What would you have done? Say, for example, your 5 trades has did not work out and all hit stop loss. Now you sitting with 10% of a kind of profit and with 10% of stop loss. Okay, and now your 11th trade came to a halt. What would you do? Because I want to read how Okay. trader like you read this situation or act मैं on this आपको situation. इसका हाँ. एक आंसर देता हूँ, राइट? इस दुनिया में सही आंसर की तलाश करना बंद कर दीजिए। बी पीस विथ इम्परफेक्शन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सुबह मैं एक ट्रेडर से बात कर रहा था, यूएस मार्केट के बहुत अच्छे ट्रेडर थे, एज अ $multi-million अकाउंट, और उनके एक अकाउंट को उन्होंने पूरा ब्लो ऑफ कर दिया था ऑफ 1 मिलियन, ठीक है, और वो 50,000 पे पहुंच गए थे डॉलर। एंड अभी क्या हुआ, अभी उनके पास एक ट्रेड था, 1 मिलियन जो था वो 2 मिलियन पे चला गया था, 2 मिलियन प्लस पे थे वो डॉलर्स में, ठीक है।
तो मैंने पूछा आप ट्रेल कैसे करें, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना सारा पीएनएल दिखाया, उसमें कुछ स्पाइक्स थे। मैंने पूछा कि ये स्पाइक्स कैसे हैं जो नीचे आ जाते हैं वापस, तो आप क्या कर रहे हैं जिससे कैसा था। वो ये गाइडेंस भी चाह रहे थे और वो मतलब फ्यूचर के इसके लिए थे, लेकिन जो है ना उस कॉल के दौरान उन्होंने मुझे पीएनएल वगैरह दिखाया। मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या होता है, जो स्पाइक जाता है बट वो फ्लैट नहीं होता है, स्पाइक जाने के बाद वो स्पाइक जाके नीचे आ रहा है। तो अभी वो वापस कुछ 75% अप थे, और पीएनएल उनका 1.23 के आसपास होगा, 1.23 मिलियन के आसपास, वो 2 मिलियन के ऊपर था। सो मैंने उनसे पूछा कि अभी आप ट्रेल कैसे कर रहे हैं, ये वापस से स्पाइक वैसा ना हो जाए। सो ही सेड मी कि मैंने ऐसे ऐसे टीयर वाइज स्टॉप लॉसेस प्लेस किए। माय ऑब्जेक्टिव इज वन, कि मुझे 2 मिलियन से नीचे नहीं जाना है, Okay. राइट। नाउ द पॉइंट इज वन थिंग, राइट, ही इज ऑल्सो ट्रेडिंग हिज वेलविंग, Hmm. राइट। द पॉइंट इज दैट ट्रेडर के तौर पे हम लोग सोचते हैं ना कि वी वांट टू बी वेरी strict on ourselves, Mhm. right? We want to be very strict on ourselves. Be fine with imperfection. जिंदगी की यदि आप लर्निंग मुझे बोलेंगे तो मैंने ये चीज सीखा, यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ मशीन। आपको इमोशन से अंतर पड़ता है। यू वांट टू ट्रेड द चार्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट योर वेलबींग, बट इट इज परफेक्टली फाइन टू ट्रेड वेलबींग एज वेल। एक ट्रेड है, जिंदगी में 10,000 ट्रेड लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर Interesting. Very डिसीजन को interesting. उतना जोर मत डालिए कि यू शुड बी, मतलब आपको कोई मतलब कि एकदम भगवान ही हो जा रहा है, उस चीज का जोर मत डालिए। एक्सेप्ट द फ्लॉज, द वीकनेसेस दैट यू हैव, मेक पीस विद दैट। आई मेड पीस विद माय ऑल फ्लॉज, अनुराग मेड पीस विद ऑल हिज फ्लॉज, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सर्वाइव इन ट्रेडिंग। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Interesting. Very interesting answer, Chirag ji. Anurag ji, हम्म। still my question remains to you. Still, it remains, and I would like to see how would you deal with this. सो ड्रॉडाउन ना आपके ट्रेडिंग में फीचर है, बग नहीं है। Okay, Uh-huh. if the examples that you're giving, right, या कॉलम मैगी or something, they knew that they are going to get into drawdown. तो हम लोग ने जो जैंगर वाला एक वीडियो दिया था ना, just check if see, uh, I'll tell you what was very eye opening to me in that session. ठीक है, हम लोग ने तो एक्चुअली जो सेशन में डाला था, I think that was only 20 or 30% of we actually learned, क्योंकि we went through all the newsletters in depth, एक एक ट्रेड देख के। ओके, हम लोग के दिमाग में क्या था ना, कि एटलीस्ट मेरे दिमाग में था कि 99 का मार्केट वाज अ स्टूपिड मार्केट, मतलब बंदर भी कहीं पे भी पैसा बनाएगा तो मिलियनर बनेगा करके। ओके, ओनली व्हेन वी लुक्ड एट द न्यूएंस ऑफ इट ना, आई रियलाइज कि एवरी डे, ठीक है, ही इज डाउटफुल ऑन द मार्केट। जैसे हम लोग का लास्ट ईयर था ना, इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे है, ब्रेथ एकदम वर्स्ट है। ही कंपेयर्ड द ब्रेथ अगेन टू 1929। ठीक है, वो पता नहीं एक एंकर पॉइंट हो गया, हर पुल बैक में 1929 आना ही है, नॉट द पॉइंट। करेक्ट। Still, he was very aggressive on risk. Okay, I'll tell you why. It came down to his objective of why he wants to trade. For him, objective was not success or failure. मतलब his actual failure was mediocrity. If you are with most of the people who are with a small account, right? Suppose say I consider say a 50 lakh or below as a small account. Suppose आप 10-15 lakh के portfolio के साथ हो, okay? In a bull market, if you end up with say 20%, 30% of a return, that is a much bigger failure than a drawdown. Because you have never risked so much and you have wasted so much of your time and effort that you have gone into a mediocrity in your life beyond a point. It is not going to have any impact. ये ऐसा करियर नहीं है कि आपको हर साल 10-20% इंक्रीमेंट होते आने वाला है एंड इन 15 years of your career you will be probably a lot more comfortable. It is not that kind of a career. It is a high risk, high reward career. There will be points of sprints, there will be points of marathons, ये केस में। What their conviction was, I'm going to get in a drawdown, but their actual skill was how to get out of a drawdown. अगर आप हर 10% पे काटते जाओगे ना ईश्वरी जी, you are only optimizing for your drawdowns. You are not optimizing for your upside beyond the point. I'll tell you how it comes. I did the same. ठीक है? You'll reach a point where you will see decent performance. You will not be very down क्योंकि you are maintaining a stop loss, right? कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप blow out हो जाओगे. I never got blown out, and that was my flaw. Not by design, but because I never took so much of risk at the start that I ever went into a deep drawdown. But my problem was I never captured so much of upside also. ठीक है, तो मैं एक वो मीडियोकर जोन में बहुत सालों तक अटका हुआ था कि ना जहाँ पे बहुत ऊपर जा रहा हूँ ना जहाँ पे बहुत नीचे जा रहा हूँ। आई हैड टू इंक्रीज माई पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी टू इंक्रीज माई रिटर्न परसेंटेज।
So that portfolio volatility में जब नीचे आता है ना, that in itself you will gain conviction once you have recovered it a couple of times. ठीक है, 2 बार आपको लगेगा कि भाई मैं काट देता हूँ, I want to play my well-being. ठीक है, you will go through a feedback loop. You will get irritated. ठीक है, कि द मार्केट वेंट अप X%, आई डिड ओनली X/2%. ठीक है, इतना सब रिस्क मैनेजमेंट अक्कल लगा के भी मैं पैसा नहीं कमाया करके, सेकेंड टाइम विल फील प्रोबेबली मोर फ्रस्ट्रेटेड. That is where a lot more people either quit trading or go a lot more deeper into it and actually start understanding the risk that they are taking. Problem for most traders is not risk management. They are trying to manage risk without even taking a risk. Okay, so it is going to happen that you'll go into a drawdown. It is a feature. It is going to be inevitable at your trading. Kolamagi, you may criticize him from coming down from 100 million to a 40-50 million today, but most of the people will give for their 4 kidneys together of their families also to get their 40 million. Let us get to a level first. Till then, a drawdown is a feature. It is not a bug. Got your point. Just a follow-up small question, just yes or no probably. Does Kolamagi do trade so often in a day like what we suggest here? He used to Does overtrade, no? Kolamagi trade so often? Yeah, what I'm saying, does he take numbers of trade during the course of the day, or 2 or 3 days trades in a day? Yeah, लेने भी दो. I think he used to take a lot of trades. मुझे जहां तक याद आता है शायद एक साल में उन्होंने 1200 है. ट्रेड भी लिया था, ये मैंने कहीं पढ़ा 2020 था. में तो बहुत भर भर के था. इनफैक्ट वी लुक एट उनका ओपन, ये भी मत देखो ईश्वरी जी व्हाट नंबर ऑफ ट्रेड्स, लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओपन रिस्क दैट दे आर टेकिंग. Most of the times the open risk was in double digits. If I go to 2020 or 21 ka streams now of Kolamagi, though most of the people have not seen, you'll see 20-25 open positions. Double digit open risk. Yeah. Okay. Uh, Okay, fine. या आप पूरा आप एक सिंपल ऐड करो, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस रिस्क कितना था, कैपिटल रिस्क कितना था, एड इन योर प्रॉफिट रिस्क. नो वे इट इज नॉट पॉसिबल दैट ही वुड नॉट हैव इट इन डबल डिजिट्स. नहीं तो इतना लेवरेज आएगा कैसे? Okay. इफ Okay. योर ओपन रिस्क इज ओनली से 2 or 3 hours, आप एक दिन में कितना ही कमा लोगे बियॉन्ड द पॉइंट? इट इज नॉट गोइंग टू गो 30 hours, नो. Okay, got your point. I got my answer also. Yeah, your scaling up will only happen, Ishwari ji, when you are risking large unrealized profits for higher realized profits. ठीक है, so manage like a day trader but hold it like a positional trader kind of. So आपका capital risk बचा के रखो, but take very large profit risks if you want. That is the only way beyond the point you can scale up. Okay, got my answer. Thank you. ठीक है. And yes, चिराग जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आई थिंक कि यदि हम लोग अब रैप अप कर सकें दैट विल बी गुड, आई थिंक. Okay, let's wrap it up. First of all, thanks a lot, Chirag ji, Anurag ji. I must say I learned a lot, and I'm sure all the participants will echo my thoughts and gratefulness to you and Chirag ji. And if this opportunity strike again, we'll have some similar meeting in the near future. Yeah. Thanks a Yeah, lot. definitely. Thank you so much Definitely. for getting us. I regret that I could not take all the questions today because of the paucity of time. We'll try and take up as much as possible later. Yeah. Okay. Thank you. Have a Sure. good day. Bye. Chalo, take care, guys. Have a good day.